Good morning, sir. Good morning. Good morning. Very good morning, sir. Very good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. सर स्टार्ट करें क्या? 11 बजने में। हाँ बस सर तो जुड़े। सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी सर। चलिए कोठारी जी स्टार्ट करिए, है ना? जी सर। जी जी। आर्या जी, चौबे जी आप शुरू करें, सर ने कहा। जी सर. Very good morning to all delegates of this program. We are today hosting this program on new technology under the SSTP program. As you know that India has celebrated its 75th Independence Day on 15th August 2021, and Honorable Prime Minister of India has desired to infuse new energy and new consciousness among the countrymen by celebrating achievement of the last 75 achievement of the under the Azadi ka Amrit Mahotsav. In order to showcase emerging STI ecosystem at state leading to Atma Nirbhar Bharat, a year-long program, Vigyan Utsav, the Festival of Science, has been planned under the SSTP of Department of Science and Technology, Government of India, as 1 month, 1 theme program. Behind of this formulating program for whole year, as 1 month, 1 theme program, the main person from the Department of Science and Technology were Dr. Devapriya Datta, Scientific Advisor and Scientist G, and Dr. Rasmi Sharma Ma'am, Scientist at SSDG Division, Department of Science and Technology, Government of India. The primary aim of this Vigyan Utsav is to create a platform for states to showcase the experience of the S&T Council in the field of research, development, innovation of the India. So total 12 themes were identified for 12 months. First theme were STI institution in the state, human resource development, R&D infrastructure, indigenous technology, innovation and startups, science communication and popularization, women in science and technology, and S&T for women, and science society. Programs has been organized by the different state councils, and in the month of May, this month, we are organizing future technologies for the state. And rest of the 3 themes, basic science for Atma Nirbharta and industry, intellectual property right, will be organized in coming 3 months. So this month we are celebrating the new technologies, which is very important theme, covering basically 4 aspects: future technology for make life easier and faster, future technology to create new economic opportunities, future technology to create opportunities, career opportunities, and 4th one is the future technologies for sustainable development and practices. So these 4 themes will focus and discuss in the today's program. Therefore, in this today program, we invited as a chief guest Honorable Vice Chancellor Professor Sunil Kumar Gupta sir. He is the Vice Chancellor of Rajiv Gandhi Pradyogiki Vishwavidyalaya Bhopal. He has also served as the Additional Secretary in the Department of Technical Education, Government of Madhya Pradesh. He also served the Secretary of Admission and Fee Regulatory Committee, Government of Madhya Pradesh. He is also Chairman, Central Regional Subcommittee of All India Council of Technical Education, dealing with technical education in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and Gujarat. Sir has keen interest in skill development, examination reform, student welfare, upliftment of standard research and innovation in the field of technical education. We have a special guest for the today's program, Dr. Rajnarayan Tiwari. Dr. R.R. Tiwari sir, holding position as Director ICAMR, National Institute of Research, Environment and Health, Bhopal. Sir previously served as the ICMR, National Institute of Occupational Health, Ahmedabad, for more than 15 years as the Director. And his vast experience in the occupational environment, health, and sustainable by publication of the national and international review journals. During last 5 years, Sir has worked as ever dynamic leadership,
ICMR Nire Bhopal is emerging as a center of excellence in environmental health medicine by laying equal emphasis on the basic clinical and community research. So apart from our chief guest and special guest, we have four eminent speakers from India. Sri Sanatan Sahu sir, Director CFTI Agra, Dr. PC Bargale, Head Department Technology Transfer Division ICAR Bhopal, Dr. Rakesh Kumar Arya, Chief Scientist MPCST Bhopal, and Dr. Anirudh Singh Ramalingam, Fellow and Scientist, the All India Institute of Medical Sciences Bhopal. Apart from our speakers, we also have two innovators which have been supported by MP Council of Science and Technology in various ways for the doing their research. Mr. Asutosh Rai and Nishi Vishwasi. So we welcome you all on this program. This entire program we organizing under the guidance of Honorable Professor Anil Kothari sir, who is the Director General of MP Council of Science and Technology. Without his guidance, support and commitment, not possible to organize such type of program. Sir will address the gathering of this program. We are requested to kindly Anil Kothari sir to kindly give your inaugural speech, sir. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, सर आ रही है आवाज? जी, ऑन दी ओकेजन ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जो कल निकल गया है लेकिन हम सेलिब्रेट इसको आज भी कर रहे हैं, मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित परम सम्माननीय वाइस चांसलर ऑफ आरजीपीवी एंड माय मेंटोर डॉक्टर सुनील गुप्ता सर, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। पूरे काउंसिल की तरफ से आपका इस कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट के रूप में उपस्थित डॉक्टर राजनारायण तिवारी जी, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था जो भोपाल में शुरू हुई है अपने तरह की पूरे देश में। आपका भी सर स्वागत है। श्री शांतनु साहू जी, डायरेक्टर सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CFTI आगरा, इनके साथ मिलके हम लेदर टेक्नोलॉजी में बहुत लंबे समय से लोगों स्किल डेवलपमेंट का काम एंड प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। डॉक्टर PC बरगले जी, बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मर हेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिवीजन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल। डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार सिंह, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल से हम लोगों के बीच में आज उपस्थित हैं। डॉक्टर राकेश आर्या जी, चीफ साइंटिस्ट ऑफ द काउंसिल। डॉक्टर NK चौबे जी, द की कोऑर्डिनेटर ऑफ टुडेज प्रोग्राम, एंड डॉक्टर RK गर्ग, डॉक्टर समीर कुमरे, जो पैनलिस्ट जो मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव के अंतर्गत सपोर्ट से जिन्होंने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का काम किया और एक डिफरेंस क्रिएट किया सोसाइटी के अंदर, हम उनके एक्सपीरियंस भी आज सुनेंगे। वी वेलकम देम आल्सो। और मेरे सभी मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथी साइंटिस्ट, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, पूरे देश की काउंसिल से जुड़े हुए साइंटिस्ट और अन्य सभी जुड़े हुए लोग, सभी को नमस्कार। आज बहुत महत्वपूर्ण इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो श्रृंखला आयोजित की जा रही है, आज बहुत महत्वपूर्ण फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, वो भी मध्य प्रदेश के प्रोस्पेक्टिव्स में। मैं चाहता हूं कि आज हम सारे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, माननीय कुलपति जी हैं, उनको ज़्यादा सुने, इसलिए मैं अपनी बात एक संक्षिप्त में ही कि हम जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं हमारे, आज ये जानने के लिए हम कि किस तरीके से फ्यूचर टेक्नोलॉजीज
हम लोगों की लाइफ को इजियर और फास्टर बना सकती हैं, इस विषय पे हम जानेंगे और आगे एक रोड मैप तैयार करेंगे कि कैसे इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। हमने कोरोना काल में देखा है बहुत सारी डिफिकल्टीज के बीच में टेक्नोलॉजीज ने कितना वाइटल रोल प्ले किया है। उन्होंने एजुकेशन के सिस्टम में ऑनलाइन, मेडिसिन के सिस्टम में हमारी टेली मेडिसिन के थ्रू काम किया है, प्रोडक्शन में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बिजनेस मॉड्यूल्स दिए हैं। Technology has played a vital role in ease of life of people. So future technologies का हमारा एक ये है कि किस तरीके से हम to make life easier and faster of the society, create new economic opportunities. ये भी एक है कि किस तरीके से थ्रू टेक्नोलॉजी हाउ कैन वी क्रिएट द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर doing cost effective technologies, making cost effective technology more productive, or increasing of production will be gain the economic। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज के लिए भी हम बात करना चाहते हैं कि इकोनॉमिक लेवल पे अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करे वो टेक्नोलॉजी। एक न्यू की सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की डेट में है कि क्या हाउ टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट कैरियर अपॉर्चुनिटीज। इट्स इम्पोर्टेंट इशू दैट शुड बी एड्रेस बाय अवर न्यू टेक्नोलॉजीज। आज हम बात कर रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजीज की। ह्यूज अपॉर्चुनिटीज देयर इन ड्रोन टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज की आज बात कर रहे हैं। एक नया बियॉन्ड रियलिटी यदि बात हो रही है तो ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी की बात हो रही है। इन कमिंग 5 years ए लॉट ऑफ चेंज विल हैपन and the new job opportunities will create through such opportunities, such technologies। आज ब्लॉकचेन और एआई हम सब भली भांति अवगत हैं कि किस तरीके से दे आर प्लेइंग वाइटल रोल फॉर क्रिएटिंग ह्यूज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर कैरियर अमंग द यूथ। इसी तरीके से हम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और है वो है ग्रीन एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस फॉर फ्यूचर। यदि हम बात करें तो आज ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज की है तो हम किस तरीके से गिली पॉल्यूशन फ्री वेस्ट फ्री हम टेक्नोलॉजीज की के लिए हम बात कर सकते हैं। हम किस तरीके से कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक ग्रीन टेक्नोलॉजीज की बात है। हम किस तरीके से अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को थ्रू टेक्नोलॉजी हम इस तरीके से प्रोडक्शन दे सकते हैं कि जिसमें हमारा वेस्ट और पॉल्यूशन बहुत ही मिनिमाइज हो। आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में वाटर से रिलेटेड हाउस होल्ड डिवाइस होना चाहिए। किस तरह की हम टेक्नोलॉजी हाउ वी कैन क्रिएट। आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हो रही है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इट इज नेसेसरी टू हैव इलेक्ट्रिकल एंड अदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हो रही है। आज हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की पूरे देश में 38 से ज़्यादा संस्थान आज रिसर्च कर रहे हैं। इट्स ए फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज की बात करें, हम कैसे रिसाइकलिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है। तो आज ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के और उससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं, और हमारे यूथ को, हमारे रिसर्चर्स को, हमारे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के पास क्या मैंडेट होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये निश्चित रूप से ये जानने का विषय है और उसके अनुरूप ही कार्य करने का विषय है। हमने मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक रिपोजिटरी ऑफ पेटेंट एंड टेक्नोलॉजीज, इस तरीके का इनिशिएटिव पूरे देश की, वो सीएसआईआर की लैब हो, आईसीएमआर की लैब हो, डीआरडीओस की लैब हो, आईआईटीज हो, एनआईटीज हो, अदर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हो, स्टार्टअप्स हो, जिन भी संस्थानों ने जो टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया है उनको ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन प्रोडक्ट में, उनको किस तरीके से हम लोगों तक जोड़ सकते हैं उन टेक्नोलॉजीज को। हमारे मध्य प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर के लिए, वुड बी एंटरप्रेन्योर के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि वो न्यू एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, हम उस टेक्नोलॉजीज की रिपोजिटरी को हम क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए हम ह्यूज लेवल पर टाइप कर रहे हैं और इस कोशिश कर रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाए जहां एक नीड जिसकी है टेक्नोलॉजी की वो उसको फुलफिल कर सके हम अपने इस रिपोजिटरी के। मैं इस अवसर पे माननीय कुलपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और
सभी और हमारे जो गेस्ट हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमें इतने महत्वपूर्ण समय में समय दिया। बाकी पार्टिसिपेंट्स के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आयोजकों को भी बहुत बहुत बधाई। एक बार पुनः मैं प्रौद्योगिकी दिवस की बहुत शुभकामनाएं देते हुए और सर को पुनः प्रणाम करते हुए धन्यवाद, अपनी बात खत्म कर। धन्यवाद सर। डेफिनेटली सर ने जो बातें कही हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स और हमारे जो इनोवेटर्स जुड़े हुए हैं इस पे आगे काम करेंगे और हम सब कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में काम करेंगे। सर ने कुछ जो ईजियर और सोसाइटी के लिए जो टेक्नोलॉजी की बात कही, सर ने जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज, टेक्नोलॉजी को कैरियर अपॉर्चुनिटीज के रूप में कैसे लें, उसके बाद ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है, ई व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी है। तो डेफिनेटली इसमें हम सब प्रयास करेंगे कि हम बहुत अच्छा सा काम करें और हमारे आगे पार्टिसिपेंट भी इससे लाभान्वित होंगे। डीएसटी ने एक कुछ 2-3 मिनट का वीडियो तैयार किया जिसमें कि 12 महीने की पूरी कंप्लीट थीम उसमें तैयार करी है। सो हमारे साथी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट का वीडियो प्ले करें जिससे कि पूरे कंप्लीट उसका थीम हम समझ पाए। थैंक यू। आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर राज नारायण तिवारी सर। ही इज द डायरेक्टर ऑफ नीरे भोपाल। As discussed earlier, sir having the good experience and vast experience in the field of medical sciences and the toxicology and medical toxicology. So on behalf of Madhya Pradesh Council of Science and Technology, we would like to invite you, sir, for your valuable talk, sir. Thank you, Dr. Chaube. आदरणीय प्रोफेसर सुनील कुमार जी, प्रोफेसर अनिल कोठारी जी, प्रोफेसर राकेश आर्य, सभी गणमान्य स्पीकर इस वेबिनार के और अलग अलग जगह से जुड़े हुए ऑडियंस, सभी को सुप्रभात।
At the outset, I would like to thank the organizer for giving me this opportunity to interact and express my views on these issues. The theme which is chosen for today's webinar, that is future technologies, is very timely. Not only from the perspective that yesterday was National Technology Day from that angle, but also the scenario in which we are currently living, the technology play a critical role. Now, we all know that in the last 2 years, we had a lot of challenges because of COVID, and this has also taught us several lessons. And one of the important lessons which we learned from these 2 years is that when entire globe is affected by some condition, then you have to be self-reliant, because then you cannot depend on others because they are also suffering. And taking that as a cue, the government of India also floated the concept of Atma Nirbhar Bharat. And if we go through our ancient literature, we know that we have developed several technologies in terms of different shastra, different vidyas. So all these things are available. And when we see our current technology scenario, again, if you see IT industry or if you see health industry, we are leaders, and we are serving in various countries as a leader, providing services to them. So in all, we feel that we have technological resource in our country which can benefit the mankind by and large. Because I belong to health sector, so I will talk a few words about the health sector. Now, as rightly mentioned by Professor Kothari, several of these technologies came into fore to help the people. One such technology was the telemedicine. Now, if you see, telemedicine was initially, it is not that it is a new technology, it is an existing technology, but then initially it was used for treating the non-communicable conditions, the chronic conditions, and it was a platform for discussing and sharing opinions between high-end professionals in the health field. But then COVID has taught that even in the infectious condition like this, this is a technology which can be very well used and serve the mankind. During COVID, when the restrictions were there, there was all safety precautions were taken with, so as to interact with patient less and less to minimize the transmission of infection. Telemedicine provided a very good platform in diagnostics, in treatment schedules. So that was a technique which came into fore. And now we all know that government of India is very much committed to provide digital services to the remotest village of the country. So we can align this telemedicine concept with this, the developing network of Digital India, so that each and every person at the remote area, and we know that in the remote area, whether it is PSC or the sub-center, we lack qualified health professionals. So these people who are living in those can also get benefited by the health services in that particular area. So that is one technology which came into fore and which showed that yes, technology can help the mankind. Another technology which is nowadays gaining speed with respect to health sector is the artificial intelligence and machine learning. For AI and ML, health is a new sector because we have very few areas where AI and ML is working, but then it is ever expanding. We are finding more and more application of AI and ML, so that the diagnostic interpretation, so that the treatment schedules, these can become as objective as possible. So that will also result in strengthening the healthcare sector. The use of use of technology during COVID is another example is the big data analysis. Now, nobody thought that when COVID came, nobody thought that India may be able to develop a platform for
having all the information related to either COVID diagnostic or mortality because of COVID, or number of the cases occurring, or for that matter, the vaccination. But we have successfully shown that we have our platform where we recorded all the information related to COVID. We have our COVID portal, which has successfully helped us in carrying out vaccination across the country, and not only in the India, but also through that app, we help other countries also, so that they can also develop their portal for vaccination and other related things. So that is another area where we have shown that we are technologically competent to serve our country. In the recent times, there has been a lot of controversies, WHO saying that our mortality figure is 10 times higher as whatever we have shown. This can be a reason, because this can be, there is a controversy because usually WHO goes with the extrapolation type of studies or prediction type of modeling type of study, and there are always chances of some errors there. But then why we are able to confidently defend that whatever figures we have at our country is near reality, is that we have all those data which is available. And so now, as things will develop, as the big data analytics, that is coming up in a big way. ICMR, through several of its center, they are also providing platform for developing skill in the area of big data analytics, because the future is of data. And so those who are able to analyze the data will be a winner. And so we are playing an important role in developing skill with respect to data analysis, and that to big data analysis. We have success. Dr. Kothari also mentioned about the drone technology. So we have successfully demonstrated the use of drone technology in healthcare. So in the month of October, we successfully launched the delivery of vaccine in the remote villages of Manipur through drone technology. And so now health is one sector role, whether it is delivering the essential drugs, whether it is delivering some essential gadgets to the remote area. Drone can help in shortest possible time, and particularly when the initial critical time of any disease is there. So drone technology, and government of India is investing a lot in this technology. Recently, I learned a couple of days back that our civil aviation minister said that we require about 1 lakh drone pilots. So that is another area where we can develop our skill, we can develop our manpower to help various sectors, including health, in this scenario. So these are some of the technologies which can help us in improving the health of the manpower. But then, having said that, when we say that technology need to be developed for the growth of the country, we should always be concerned about the environmental consequences of these technologies. And as rightly mentioned, that the green technology, we should opt for the green technology. And green building is one such way of adopting green technology, not only fulfilling the sustainable development goals which are given, but also conserving our resources. And taking that into concept, the ICMR Nire campus, which is erected in Bhauri, is one of the biggest green building campus in the Madhya Pradesh. We developed that in that country, particularly the research laboratories which is there. So we have taken care of all different concepts, whether it is sensor-based light is there, whether it is vermicomposting is there, whether it is recharging of the aquifers are there. So we have taken all those things and we built the green building. India, as a leader in environmental conservation, is committed to different programs that we are really concerned about the environmental conservation, and it is reflected through various programs also.
whether it is Swachh Bharat, whether it is Ujjwala scheme, whether it is India International Solar Alliance, whether it is the Ghar Ghar Jal Yojana. So all these programs which are run by the government, they reflect that our concern is toward environmental conservation, and at the same time we are also using different technology, available technology, and that indigenous technology for the benefit of the common human being of our country. And so if you see the vast past we have with respect to technology, the vast manpower, technical expertise which we have for our current technology, I think the Atma Nirbhar Bharat theme is really achievable in the coming years, and we may emerge as a technological leader in that, not only in the region, maybe providing technology sharing, knowledge sharing to the entire globe. So with this, I feel that role of future technology is immense when we talk of self-reliant India. With this, I once again thank the organizer for giving me the opportunity. Thank you. Thank you, sir. Sir had mentioned that during COVID time, there are many technologies came in the field of medical sciences. Even sir rightly said that the AI technique and used for the diagnostic purposes, and data analysis is the important thing in nowadays for diagnosis of the diseases. Even some more technologies like NGS technology, next-gen sequencing technology, and DNA sequencing technology also very well established in the India. So the microbes and other pathogens can be sequenced during in the coming years. So thank you very much, sir. Now we are waiting for listening our chief guest, Professor Sunil Kumar Gupta sir. He is the Vice Chancellor of Rajiv Gandhi Pradyogiki Vishwavidyalaya. So on behalf of MPCST and our organizing team, we all are requested for your talk, sir, please. MPCST के महानिदेशक अनिल कोठारी जी, आज के विशिष्ट अतिथि तिवारी जी, राजनारायण तिवारी जी, I can see a number of faces, known faces. Vargale ji, I can see Kori ji, I can see number of scientists from MPCST. So it's a really wonderful day. We are celebrating this technology day. लेकिन आज मैं कुछ हट के बात करना चाहता हूँ, और मेरी आदत भी है थोड़ा सा. अभी लंका में जो कुछ हो रहा है आप लोग देख रहे होंगे क्या हो रहा है. वैल्यूज और एथिक्स नहीं है. सो फर्स्ट थिंग, टाइम टेस्टेड, टाइम प्रूवन, और जो फ्यूचर में भी काम आने वाला है वो हमारी मोरल वैल्यूज और एथिक्स ही आने वाले वाली. जिस कंट्री में मोरल वैल्यूज होंगी, एथिक्स होंगी, काम के प्रति कमिटमेंट होगा, दूसरों के प्रति सहृदयता होगी, एक एकोमोडेटिव रुख होगा, वो देश सरवाइव करेंगे. और जो देश इन चीजों से हटेंगे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे. So what is happening in Russia and Ukraine, one can see, and what is happening in Lanka is again eye opener. लंका में क्या हुआ? लंका में पॉपुलर गवर्नमेंट ने वहां के टैक्सेस को हाफ कर दिया और ऑर्गेनिक खेती के नाम पर उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजेशन बंद कर दिया. अब इन दोनों का इम्पैक्ट ये है कि वहां पे शॉर्टेज हो गई रोटी कपड़ा मकान के, और जो इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी हुई उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि पूरे सड़कों पर लोग घूम रहे हैं. और 2022 में इस तरह के सीन अगर हम देखते हैं टीवी पर तो थोड़ा तो आश्चर्य होता है, और जो रूस और यूक्रेन में हो रहा है वो भी देखकर आश्चर्य होता है. तो बेसिक जो डायमेंशंस है लाइफ के, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, वो सेम है, आज भी वही है. और कोई भी टेक्नोलॉजी सरवाइव करती है, ग्रोथ करती है, और कौन सी टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है उसकी सस्टेनेबिलिटी पर डिपेंड करती है. और सस्टेनेबिलिटी के 2-3 डायमेंशंस हैं, आप भी जानते हैं. इकोनॉमिकल डायमेंशन रहता है, उसकी इकोनॉमिक्स रहती है, और सस्टेनेबिलिटी रहती है. अगर अब रोटी की बात करें और इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो ये बड़ा एक डिबेट है कि भाई हमें ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए कि फर्टिलाइजर्स को यूज करना चाहिए, ऑप्टिमल इरिगेशन क्या होना चाहिए, और अभी भी हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है. इट मीन्स डेफिनेटली
जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम 4 की बात कर रहे हैं, सबको ही जानता है पहला रिवॉल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, स्टीम इंजन आया, दूसरा हुआ इलेक्ट्रिसिटी आई, थर्ड आया कंप्यूटर आया, चौथा साइबर वर्ड आ गया है, और अब 5G टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और 6G की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। उन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए ही अब इन पर सॉल्यूशंस की बात हो रही है। वट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड जो हमारे पिछले स्पीकर थे वो जो भी बात कर रहे थे उनमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इन्वॉल्व था। मतलब स्पीड ऑफ इंटरनेट बहुत महत्वपूर्ण उसमें कारक हो गई है। तो डेफिनेटली अगर रोटी की बात करें तो देन वी हैव टू सी हाउ वी कैन इंक्रीज द इनकम ऑफ अ फार्मर्स। जैसे डबलिंग की हम बात करते हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज टॉक अबाउट कि हमारे किसानों की इनकम डबल होना चाहिए। और हम भी ये मानते हैं कि अगर भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनना है तो किसानों की इनकम डबल नहीं ट्रिपल होना चाहिए। ये बात हम पहले भी एक बार बरगले साहब के कार्यक्रम में कह चुके हैं, और उसका लॉजिक भी मैंने वहां पर बताया था कि क्यों होना चाहिए ट्रिपल। अब इस ट्रिपल इनकम को करने के लिए क्या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, दैट वन हैज टू सी वेरी क्लियरली। और बातें जो हो रही हैं उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेके ऑप्टिमल इरिगेशन से लेके प्रॉपर पेस्ट कंट्रोल से लेके प्रॉपर मार्केटिंग के लेके प्रॉपर लॉजिस्टिक को लेके एवरीथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट एंड यूजिंग इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ थिंग्स आर वी आर टॉकिंग अबाउट। और फील्ड पर नहीं पहुंच पा रही है, टेक्नोलॉजीज आर देयर, various concepts are there, finally we are failing to transfer those concepts to the fields. That's one biggest drawback in Indian context। और उसका रीजन क्या है, एजुकेशन। अगर हर समस्या की जड़ में अगर आप जाएंगे तो अल्टीमेटली यू विल फाइंड दैट एजुकेशन इज ए बिग हर्डल in adopting and promoting appropriate technology. You may be having technologies, finally it is not being adopted, reason being you are not educated in Indian context, I'm talking in particular। लेकिन शिक्षा में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है, दैट इज थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एंड दैट रिवॉल्यूशन विल बी ड्रिवन बाय द डेफिनेटली द डिजिटल टेक्नोलॉजीज। द फ्यूचर ऑफ योर क्लासरूम इज गोइंग टू चेंज, दैट्स माय पर्सनल परसेप्शन। Whether you believe it or whether you don't believe it, but it is going to change, definitely it is going to change, and the kind of technologies which are coming up in the field of education are mind boggling। Kind of augmented reality, kind of virtual reality, kind of 3D applications, the kind of communication applications, the kind of type of media, all these things are coming to your classrooms, outside classrooms, and definitely the shape, size, the way we will be teaching is going to change, and that is going to make whole change in the society or the ecosystem। ये सारा का सारा चेंज एजुकेशन से ड्राइव होने वाला है। और एक बात अपने को अगर बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए 75वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता की, कि अगर हमारे विश्वविद्यालय इन चुनौतियों को स्वीकार नहीं करेंगे और इन चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, इफ वी आर फेलिंग टू रिस्पॉन्ड द चैलेंजेस इम्पोज्ड बाय द सोसाइटी, ये जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनने का, ये कभी भी फुलफिल नहीं होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड ओनली एंड ओनली थ्रू एजुकेशन। जैसे ही ये देश शिक्षित होगा, जैसे ही आपके विश्वविद्यालय सक्षम बनेंगे, विकसित बनेंगे और समाज में आने वाली हर समस्या को चुनौती के तौर पर लेकर उनके लिए सॉल्यूशन देंगे, only then you will finding your society will convert it into a developed country, और आपकी पूरी सोसाइटी उसका बेनिफिशियरी हो गया। और उसका जो इंटीग्रल कंपोनेंट जो मैंने शुरुआत में किया, मोरल वैल्यूज और एथिक्स कपल्ड विथ मोरल वैल्यूज एथिक्स, अगर ये उससे कपल्ड नहीं होंगी तो जो टेक्नोलॉजीज को हम फ्यूचर टेक्नोलॉजीज कहते हैं वो फ्यूचर डिस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। You will find a time wherein all the technology are being used by the persons destroying the humanity itself। This kind of scenario you may come up with, so it shows clearly, अगर you feel like you are being empowered in the society, आपको हम टेक्नोलॉजीज के थ्रू empowering कर रहे हैं, empowered कर रहे हैं। और आप तो जान रहे हैं ना, आजकल तो जीन थेरेपी की बात हो रही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात होती है, आज तो ये बात हो रही है कि कैंसर को, अगर आपकी फैमिली में कैंसर हिस्ट्री है तो आपके जीन्स की भी एडिटिंग करके हम जीन्स तक को चेंज करने की बात कर रहे हैं आजकल। The kind of computational facility, the kind of genetic engineering, the way it is being developed, now people have started talking about that the cancer can be cured by editing your genes at the time of your birth itself। तो फ्यूचर तो ऐसा है कि मतलब माइंड बॉगलिंग है, but whether we are going to use these kind of futuristic technologies for the real development of the mankind or not, that's a big question।
Reason being, ultimately whatsoever you are having, finally if you are not feeling happy, अगर आप खुश नहीं हैं, आप अपने वर्क एनवायरनमेंट से खुश नहीं हैं, अपने इकोसिस्टम से खुश नहीं हैं, आप अपने पड़ोसी से खुश नहीं हैं, आप अपने शहर से खुश नहीं हैं, आप पॉलिटी सिस्टम से खुश नहीं हैं, then what is the use of all these technologies? So definitely it means that whenever you are developing a technology and if you are thinking about that technology and if you are trying to adopt those technologies, then first you have to think about the society, ecosystem and sustainability. And sustainability means human being का good being, मतलब human being का अच्छाई के लिए, उसके बढ़िया होने के लिए, उसके खुश रखने के लिए, लोगों के सफल होने के लिए, वो चीजें अगर उसमें इंटीग्रल कंपोनेंट नहीं है, तो any technology whatsoever is not going to work. And that's what I'm proposing here. While selecting our future technologies, we have to think very carefully the kind of demography we are having, the kind of population we are having, the kind of income divide we are having in India. We have to find out the ways in selecting those technologies which are India friendly in particular. अगर हमने ये नहीं किया, तो ये जो social divide है वो इतना widened होता चला जाएगा, and a time may come wherein you will be facing situation like Sri Lanka. So to avoid that kind of situation wherein literacy is being supported by the equal distribution of the wealth and the roti kapda makan is taken care by adopting sustainable energy. आपने just एक spike देखा, किसमें spike देखा? A simple spike has been seen in the costing of the petroleum products. और इंडिया की इकोनॉमी में उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आपने देख लिया क्या हुआ. जैसे ही क्रूड $110 पहुंचा, पेट्रोल डीजल 120 और 100 रुपीस हुआ, उसके रिजल्ट आपने देख लिया. और लंका में तो आज डीजल उपलब्ध भी नहीं है. It means you require those kind of technologies which are local, wherein you can rely upon, wherein you are not dependent on anybody, wherein you can respond in time. Only then you will be having a win and win situation. Otherwise, what will happen? You can follow any country, but if you are not self-dependent, or that's why this call of Atma Nirbhar Bharat has been taken by our Honorable Prime Minister. Deliberately this call has been taken, and you have to be Atma Nirbhar in each and every area, including energy security. So institutions like MPCST, which are doing wonderfully well, should integrate with all the universities and so try to evolve a ecosystem which follows morals, ethics, values, along with selecting such kind of technologies which are India friendly and which can be used sustainably in Indian context. And I hope in the able leadership of Anil Kothari ji, MPCST will be delivering all these things. Thank you very much. Thank you, sir. जैसा कि सर ने अपने लेक्चर में बताया, एड्रेस किया कि टेक्नोलॉजी है उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूज हो. दूसरा एजुकेशन पॉलिसी या ये है या एजुकेशन का जितना इन्वॉल्वमेंट होगा और एक राइट डायरेक्शन में पॉलिसीज फ्यूचर पॉलिसीज होंगी तो ये स्थितियां नहीं बन पाएंगी. सर जहां तक है मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कई सेक्टर में काम कर रहा है और आगे जैसे आपकी जो गाइडेंस है, जो मार्गदर्शन है, उसमें डेफिनेटली हम आगे काम करेंगे और हमारे महानिदेशक महोदय के मतलब निर्देशन में इस पे हम लोग वर्क करेंगे. मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से हम सब की तरफ से हम बहुत आभारी हैं सर कि हमको इस प्रोग्राम के लिए आपने समय दिया, अपने वैल्यूएबल टाइम में हम सबको एड्रेस किया. हम सब की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद सर. So next, MP Council of Science and Technology having many divisions and head of the department of a particular division are working on the various aspects of the science and technology. So Council of Science and Technology last almost 40 years are working in the various technologies and even they are also working on the new technologies. So MPCST has supported various projects, even they also on doing their work. So all the data, all the information has been compiled and Dr. N.K. Chauve, head of the department PIC, Patent Information Center, will deliver the activities and future technologies of the MP Council of Science and Technology. So now I would like to request Dr. N.K. Chauve for delivering the achievement and new technologies of the MP Council of Science and Technology. Thank you, Dr.
This is a good opportunity given to me to present the activities of the council. So all the council's activities are compiled here, and I will show what activities and what divisions are. So on the occasion of today's Azadi Amrit Mahotsav under the State Science and Technology Program, future technology is the topic of today, and we are presenting the MP Councils of Science and Technologies infrastructure, its projects, programs, and the future technology and future programs which will be conducted in the near future. So next, please. These are the basic objectives of our council. Some of the important objectives are the science and technology intervention for achieving the socio-economic objectives of the state, and to advise the government for policies and measuring the necessary to promote utilization and science and technology for socio-economic objectives, to support financially as well as the technically to promote and coordinate the research and development projects and programs to achieve the specific objects, and management of the natural resources, the other resources through various institutions and organizations in the state and in the nation. It also, the objective of this council is also to promote the popularization of science and technology, incubate scientific temper, attitude, and creation of excellence and capacity building amongst the people of the state. And it also interact with the other state councils and national science technology bodies for the related objectives, and exchange the ideas and technologies to implement whatever is suitable for the peoples and the institutes of Madhya Pradesh. So to accelerate the process of modernization in Madhya Pradesh through the use of science and technologies, as our VC sir, Chief Guest, has rightly explained that the moral and ethics are very necessary. So we will keep in mind that whatever program we will implement, definitely this will also be added for the value addition and to sustain the technologies and sustainable developments of the future of the state. Next, please. Some of the important centers and activities are displayed here. One of the important center of this council is Remote Sensing Application Center, which perform the land use, water resources, wasteland, forest environment, agriculture-based activities using the satellite remote sensing, GIS. So many of the thematic maps has been prepared by this center, and these are using by the user departments of the state as the modern technologies to enhance their capacity and get the precise results. So World Technology Application Center is also another center which is working under the umbrella of MP Council of Science and Technology. Here, the activities related to the green technologies such as the bamboo, pottery, ceramics, bamboo housing are being implemented, and the skill development programs and processes are also conducted regularly at our field center, so that with the help of various national institutes, so that the skill development, employment generation, and socio-economic status is upgrading for the peoples who are related with the rural technologies. Climate Change Center is also existed here, where the geological and the archaeological aspects are covered for the age dating using the instruments available in Climate Center. Advanced research and instrumentation facilities are also available here under the umbrella of this facility. There are three major centers. One is Center of Excellence in Biotechnology, MP Quality Assurance Laboratory, Professor T.S. Murthy Science and Technology Field Assistance. So in the Biotechnology Center, which is one of the unique center in the MP Council of Science and Technology, here in the leadership of very experienced scientists,
the participants, students and academics are doing their research and dissertation works on the various advanced instruments. Likewise, in the quality assurance laboratory, the regular training programs are being organized here to enhance the skill as well as to develop the use of advanced instrumentation experience to the academics and the researchers. In the TS Murthy Science and Technology field stations, here the tissue culture lab is available. The Rural Technology Center is also working there in Abdullahganj for the field trainings and the trainings for the farmers and the artisans related with the bamboo, the pottery work, leather work, and those are used. Those trainings are conducted with the help of the advanced tools and techniques developed by the IITs and IIMs and other national institutes, which give the very precise results and making perfect to the artisans who are getting training. So, which is helping them to enhance their skill, experience, and getting upgrading their socioeconomic status. So, apart from these, the other activities which are performed by the various sections, some important are the science and technology popularization. Using by these sections, the science and technological activities are performing in the school, colleges, institutes, and science fairs are being organized in the various districts, in the fields. The experience of various national level scientists and instruments demonstration is also doing there, so that the persons, the peoples, students, and the local peoples can be interact with the science and technologies, new and modern technologies, and they can be aware and adopt them. So, apart from this, the research and development facilitation division is also working in the MP Council of Science and Technology, which help to the academic institutes, universities, and the colleges of medical field, pharmacy, engineering, and basic sciences to provide the financial grant to do the further research for the future. And these technologies which are developed by the R&D activities by the institutes and academic institutes and colleges and universities are being used by the are using in the benefit of the state. The third one is Science for Socio-Economic Development Division, which is basically working for the rural peoples, the women, and the artisans. So we are also covering the research, the academic institutes as well as the common people, artisans, karigars, and women by this section to enhance their activities. So many of the very important training programs and the seminar workshops are being organized for those sector to skill them, to aware them, and to upgrade them. Under the Mission Excellence, MP Mission Excellence program, this division conduct a mega program in every year for the students right from the 8th to the 12th, and some college students are also being added in this program. So those students are facing the state level competitions. They are visiting, and they are selected on the meritorious basis, and the selected candidates are being selected students are being faced to the national level scientists, and the visit of the national labs and the national institutes are also carried out in the various parts of the country. And after that, after the examination, competitive examination, the selected candidates are awarded with the scholarship, and who are continuing their academic studies in the science and technology stream. So we are also most of the sectors, right from the student, artisans
to the academics, we are covering by these sections. And the MP Science Network is also helping us to create various clubs and the activities related to the science in the various corners of the Madhya Pradesh to aware the people of the state. Patent Information Center is basically supported by the MP in the MP Council of Science and Technology by the Department of Science and Technology since last more than 2 decades, and it helps people to from grassroots level to the academics and the industries to aware about the different types of ideas by using the webinars, seminars, camps, and these the peoples and the innovators who are coming in the council are also being technically supported, and the various types of IPR are being applied by the Council of Science and Technology. Ujjain Dongla Planetarium Observation Complex is there, which is one of the unique planetarium and the observatory available here. So this facility is used by the people. Establishment of Science Park in Jabalpur, and it is also in process. So Madhya Pradesh resource atlas are also prepared district wise for the various districts, and some of the rest of the districts are being in progress. MP Library and Science and Technology facilities available in the council, where a lot of literature and digital materials available to concern. Publication and public relations is also one of the important factors to enhance and popularize the activity of MP Council of Science and Technology. Next, please. So these are the thrust areas which are mostly covered by the council under the R&D projects: climate change modeling, nanotechnology, water resources management, watershed management, mineral investigation, rural technology, technology transfer, agriculture, food preservation and food fortification, clean and renewable energy, waste management, health and hygiene, Narmada Seva mission. The themes are also are concerned with the science and technology. In river science, documentation, river health indicators. Programs are also associated with the national mission, such as Make in India, Digital India, Startup India, Swachh Bharat Abhiyan, and Atma Nirbhar Bharat. Other related activities of the development of states are also being in care. The documentation of traditional knowledge and the practices is work is also in process. So under the Science Society Development Program, the base management under Narmada Seva Mission, health and hygiene for women, non-conventional energy, cluster development skill and skill development, women-centric programs, and the women empowerment programs are being initiated, and these are run by the council. Under the Science Population Program, the program related with the Narmada Seva Mission, celebration of national and international days, years, themes, science fairs, camps, Olympiads, and Children's Science Congress are also being organized regularly every year to promote the scientific activities. Next, please. MP Council of Science and Technology, under the different programs, these are some segments which are covered: the research and development, scientific validation of traditional knowledge, science popularization, science for socio-economic development, seminars, symposia, and workshops, fellowship for training of young scientists, international travel grant, and Navajar Protsahan. These programs are run by the council, and council also provides the grant to the relevant institutes. Next, please. Under the research and development programs, these are the important objectives under which the research projects are given to the research academics and NGOs, reputed NGOs in the benefit of Madhya Pradesh, and this covers the physical sciences, engineering sciences, and pharmacy, etc. Next, please. Young Scientists Congress, seminar, symposium, and workshops, international travel grant are also covered under the R&D division. Next, please. Next. Under the scientific validation of traditional knowledge, the main objective is to
collect the traditional knowledge of the various parts and remote areas of the state, and this has to be documented in the systematic form and translate into the English to keep as a important document which can be consulted by the researchers, academics, and the IP filing peoples to avoid the duplicacy of the research. Next, please. Under the sciences program, the skill development, women empowerment through science and technology, program through government organizations, cluster development programs and the participation in Vigyan Mela, Vigyan Sammilan is being organized on regular basis. Next, please. This is one of the one important program of the council, Makeshift Clinic, as it's self-explanatory that one clinic which can be made and shifted to the another places without damaging it. So the MP Council of Science and Technology has been implemented this program in the JT hospital during the pandemic period, and the technology developed and transferred by the Central Building Research Institute Roorkee and CSIR MPRI. This was implemented and supported by the MP Council of Science and Technology. The cost of this clinic was 5.9, which was established in the government JT hospitals. The area for this clinic is 500 square meter, and the important features which is covering under this clinic is this is foldable, durable, fast to erect, water, wind, and fire resistance, easy to transport, and cost effective and reusable. And in this clinic, the registration counter, the computer facilities, space for the machines and oximeters, sampling, medicines, storage, and doctor's cabin is available. So this is one of the important clinic which was implemented by council. Next, please. The planetarium is well advanced. A planetarium is established in Ujjain, which is used by the people of Ujjain and those who are visiting to the Ujjain. This is one of the advanced planetarium in India, which have the hybrid optomechanical projector, and the quality of the picture and the demonstration is very excellent. Next, please. This is also an important the observatory is constructed in the Dongla, and this observatory is used by the astrophysicists and the scientists related to the physics and astronomy for the observations of national and international level. So this observatory is very important because this is situated on the topic of cancer. So the observation, whatever is recorded, are very precise, and the data can be very easily analyzed. Next, please. So under the quality assurance lab, as earlier we have stated, that the analysis of water and soil sample, instrumental analysis for the characteristics of samples, and this division organizes the training programs, laboratory visit to the scientists, academics, those who are interested to see the facilities, and the various facility is provided for the projects, dissertations, internships, PhD, experimental works for the to the students of postgraduate, MPhil, engineering students, and the PhD scholars from the 1 month to the 6 month. So some important instruments which are available in the lab are atomic absorption spectrophotometer, Fourier transform infrared spectrophotometer, UV visible spectrophotometer, microwave digester, protein analyzer, and flame photometer. Next, please. The central
we have already discussed about the Center of Excellence of Biotechnology, and so we will not repeat it again. So in the plant tissue culture laboratory, using the instruments, the trainees, students are being entertained for the dissertation for the up to the 1 month to the from short period to the long period, and new protocols of the medical plants of Brahmi, bamboo, neem, ashwagandha, sarpagandha, adusa are prepared and using this technology. Next, please. One important cell which promotes the innovation is also exists in the council, which promote the innovation related agricultural machinery and practices. One of the innovator is invited today to share his experience and show his work in the council, and he has also filed the IPR for his tools and machines. To promote the innovations to tool and machinery used by the artisans, which belongs to the carpenters, blacksmiths, potters, and weavers, etc. And this division also promotes to the innovation to the mechanism of bicycle, rickshaw, handicraft, bullock carts, etc. And it also promotes to the innovation in the application of non-conventional energy. It also promotes the innovation in teaching and research in science and technology. So many of the innovators has been approached to the council and they will get benefited, and council is regularly supporting them. Next, please. Under the Patent Information Center, as I earlier discussed, the awareness programs, camps, and the filing facility is available. So this shows the status that more than 5,000 people were benefited by this center, and more than 200 IPR has been filed. Out of them, the 14 patents, 20 designs, copyrights, and trademarks were registered, and this process is still continuing. And the academic institutes are getting consulted with the center to protect their IPR. Next, please. Next, please. Under the Climate Center, the paleoclimatic and geoarchaeological investigations of the Upper Betwa Basin, the Narmada Valley, Vidya Plateau for the stone is artificates at various level, and Daraki, Chattan Cave, Bhanpura district, Mandsaur, these areas are covered by the Climate Change Center to get the data and investigations. Next, please. The rural technology activities are also explained earlier. Here, the main objectives of this center is to identify, conserve, and promote the innovative ideas and practices of the rural artisans. Integration of traditional and ancient technology together with the scientific knowledge and value addition. Conduct training for the self-employment generation with the scientific intervention on the bamboo, leather, pottery, metal crafts, and other related trades. So for this, the supporting national institutes are CFTRI Agra, CGCRI Naruda Ahmedabad, MP State Bamboo Mission, National Institute of Design, SADMAP, and TriFed, etc. Next. All these activities are conducted in the field station at Abdullagarh. These trainings are for the shorter duration as well as for the longer duration. So these are some broad expectation and support in areas for the future technologies and future work which will be carried out by the MP Council of Science and Technology. Council is preparing the vision document for 2035. It is also formulating the Madhya Pradesh Science, Technology and Innovation Policy. Identification and mapping of the need of science and technology in Madhya Pradesh, specifically the village level, is also in process. Establishment of science centers at divisional and districts levels and science city at the state level is also in progress. So promote the entrepreneurship, startup, innovation, and skill development programs among youth of the state through science, technology, and innovations by the various sections and divisions of the council is in the
process. Enhancement and upgradation of the MSME sectors through advanced and new technologies, which is available in the various national institutes, is provided to them on the basis of the demand. Strengthening science and technology in science education at college and school level activities are also focused, and these are working regularly. The scientific validation of ancient traditional knowledge, especially in yoga and the Ayurveda, is initiated. And one important thing which I want to add here, that during the visit of Prime Minister in Bhopal, the IS Department of Madhya Pradesh has developed one app and the data analysis system and methodology to identify the sickle cell, and this data can be stored, analyzed, and the output can be created in the form of the persons who are affected with the sickle cell and not affected with the sickle cell, and those who are probably to affect. So this app was launched by the Prime Minister, and this was very much appreciated to protect the sickle cell in the future generation. So, as our Prime Minister has also inaugurated the largest yoga and ice center in the Jamnagar, after the inauguration of this Ayush center, many of the pharmacy manufacturers are approaching to the state to develop the Ayush-based medicines in the Madhya Pradesh at low cost, and which are having the good quality. So during the visit of our Home Minister, Government of India, in his last visit, the various ice products were demonstrated and shown to the Home Minister, and he appreciated the quality, because these products are being exported to the Gulf countries. So we are also pioneer in the Ayurvedic and in the Ayush field. Promotion of science and technology in regional language is also in progress. A specific mission board program for the Atma Nirbhar Madhya Pradesh, food technology, Ayurveda, agriculture, MSME, rural technology is in process. As our Director General has rightly said, that the repository of the technology and the patents are being in process. The letters has been written to the many institutes, and the response is also coming. So we have initiated to prepare the repository of the patent and technology in the council, which can be provided to the industries and the needy persons on the basis of their demand. Any other areas which are suitable for the science and technology intervention in development of Madhya Pradesh will also be covered in the future, and this all will for this the financial support will be requested to the various concerned institutes. So with this, the activities of and the futuristic regarding the futuristic technologies, the MP councils of science and technologies initiations are being displayed. And with this, I would like to end with thanks. Thank you very much. Thank you, sir, for delivering your talk on the activities and future activities of the MP Council of Science and Technology. Definitely, our participant and innovator and research scholars will get benefited by using or understanding the technology of MPCST. So now we have a 4 expert lecture from the eminent scientist of India. First lecture is from Sri Sanatan Sahu sir. He is the director of Central Footwear Training Research Institute, Agra. Sir, having vast experience, more than 35 years of experience in various fields of leather technology and so on. Basically, sir, the following fields like leather and footwear technology, techno-managerial consultancy, business development, cluster development,
technology intervention, skill development, human resource management, industry motivational campaigns. So, in the theme of new technologies, there are 4 subdivisions, 4 objectives. Future technology make easier. So, under the 4 technologies, Sir will cover the career opportunities in the field of leather technology. मैं आशा करता हूं कि हमारे जितने भी जो ट्रेनीज हैं, हमारे जितने भी जो पार्टिसिपेंट हैं, वो लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से मैं सर को लेक्चर के लिए इनवाइट करता हूं। सर प्लीज। Thank you very much, sir. I think I am quite audible. Can you please listen me? Am I audible to everybody? Yes, sir. Please go Okay, ahead. sir. So I'm just sharing my screen. My screen is visible, I think now. Yes. Visible. Yeah, Please thank you very much. make it full screen. Yeah, I'm doing it. Right. Thank you very much, dear Mr. Kumre, and all the very senior officers of our MPCST. It is my proud privilege to be a part of this deliberation, which is having a very noble purpose to induce new technologies in different areas. And as far as our institute is concerned, we are associated with MPCST for last 10 years in different occasions. And this is another privilege to me to be here to discuss something about the emerging technologies in footwear industry as well as career opportunities therein, and with an intention to reach to our target audience in the said field. Before going further regarding the technology and career opportunities, let us discuss something about some important facts and figures about Indian footwear industry. Indian footwear industries plays a very significant role in socio-economic development of the nation. We know that the days have already gone that when a pair of footwear was used to mere protect the foot from the different calamities and feeling comfort. Now it has become an inevitable part of our costume, and different types of footwear are being used for different purposes, even in the lower and middle income group people. Demand is growing and it shall keep on growing in the tune of growth of income, urbanization, and the globalization in total. India is the second largest footwear producer in the world, and annual production capacity 1,000 crores rupees. That includes exports of about 20,000 crores. A huge employment generation has become possible by this industry, and about 13 lakh people are directly involved, and more than 2 times are indirectly engaged in this field, and mostly more than 50% people are belonging to the scheduled caste, economic backward of the community, women, and some minorities in the country. We are producing about 2,500 million pairs, about 10% of the global production in the country. More significantly, more than 90% of the production comes out of the very micro and small scale sector. At the same time, 90% are consumed in our domestic market, and only 10% are being exported throughout the world and major parts to the European nations. While saying so,
India is also claimed to be the second largest consumer of footwear. In fact, it was in number 3, but last year it has covered USA. Now it is after China, the second largest consumer. That's why the domestic market is very huge. At present, per capita consumption is about 1.75 pairs, while average global consumption is about 3 pairs, and for some development nations, it is nearly 7 to 10 pairs. Retail market in the country is growing at the rate of 20% almost. It's a very labor intensive industry. A good number of population, women population is involved in it. India is endowed with huge raw material resources. About 21% cattle population we are having, and also 11% of goat and sheep skin are available in the country. In India, it is very easy to access the new design and technological developments, and very easy accessibility to the international markets in the present scenario. World's different important brands, reputed brands like Ann Taylor, Valley, Chatters Club, etc., are being manufactured in the country. At the same time, many of our Indian brands have acclaimed international reputations like Bata, Liberty, Relaxo, Metro, even Khadims. Basically, when we are talking about the footwear technology, there are 3 main areas the technology is implemented in. Number 1 is designing and new product developments. We know that footwear, being a fashioned product, fashion-oriented product, the demand, the style, the design, the look is changing very fast. And the designing and new product development is the very core area of concern of footwear business. It starts with the conceptualization, that is visualization of new product, how the product will look like in terms of shape, color, in terms of feeling, in terms of comfort, in terms of purposes. So based upon that, the concept has to be transferred into the sketching. The sketching may be physical sketching, manual sketching, or it is a computer sketching, but now virtual sketching has come into the picture. In the virtual sketching, it can be seen from 360-degree angle, and from the different angles, the product can be seen and felt. Pattern development is another core area, because the foot comfort is very important area of concern for every customer. In any garments, if the garment is little bit tight or loose or whatever, can be managed. But a pair of footwear cannot. Many times we compromise with the sizes and fittings, but the days have gone, and the accuracy and comfort in fittings and sizes is very important, and pattern development is another core area of concern when the technology plays a very vital role. After the development of patterns of different components, then sample is being developed and it is being validated with the market or the buyer in order to ensure that what design has been developed and the corresponding patterns are to the required specifications. Once it is validated, normally what happens, the design is being developed for a particular size, middle size. For example, size 7 is for the gents, or 40 in the French size, and size 3 or 4 in children, in ladies. And once the patterns are being developed, the patterns are being graded
into different sizes. And then the tooling is being done, the dies are being made, or the even software is being programmed so that cutting process can be done through dieless cutting machines. These are main areas as per the designing and new product development. Sample development segment is concerned, then the entire thing is transferred to the production line. In the production, there are mainly 4 different sections. It starts with the component cutting and preparation. In the component cutting, as per the desired specifications, the dies and patterns, the components are being cut from different suitable materials. It may be leather, it may be non-leather like synthetics. In synthetics, it may be coated fabrics like PU coated fabrics, rubber coated fabrics, PVC coated fabrics, which are known as resins, and polymerics also. It is another new generation of polymers which is having equivalent characteristics of leather. So these materials are being used for upper making, and in the cutting section, the different components are being cut. Many a time, the bottom material, the soles, are being taken from the flat material, and that cutting process is also done in the cutting process. Whereas, in many cases, molded soles, molded unit soles are being used, which are available into ready-to-use form. There are many other components like reinforcement materials, which are given, which are used at the toe area in between the upper and lining to reinforce the toe part, and it will help to retain the shape for a longer period. At the same time, a piece of stiffener that is being inserted in the back part in between the upper and lining in order to strengthen that area and in order to facilitate the gripping while we work. So these flat materials are being cut in the cutting department, and then the materials are being prepared in order to make them ready for the next operation, that is upper closing and fabrication. And the main operations are like skiving. Skiving means we are reducing the thickness at the edges to facilitate the uniform stitching and to remove the bulginess at the joints. Similarly, many other things are folding is being done, some jimping is done, edge coloring is being done, and many other operations are there which are done to prepare the upper components for the next operation, that is fabrication or closing or stitching operations. In the upper closing and stitching, we used to prepare the components, then we have to assemble it and we have to finish it so that the upper can be ready for the next operation, that is shoe construction. Next operation is lasting, making and finishing, where the upper components and bottom components are being attached together by use of an insole, which is said to be the foundation of the shoe, where the both upper and bottom components are being attached together. Then it goes through different operations. The lasted upper part as well as the soles are being prepared chemically so that the adhesive can be applied on them for stronger bond. Then sole being attached, then finally it is being finished, then it goes for the packing. Now the packing and dispatch is another very core area of concern as per the shoe industry concern, especially when you are thinking about the exports, when it takes about 2 to 3 months sometimes in shipment.
proper packing is very much essential with the required parameters. While doing this process, testing and performance evaluation is another core area. Now we will be knowing that the BIS has made it mandatory even for the domestic consumptions. The test has to be done to evaluate the performance of footwear. It is both in terms of physical testing as well as chemical testing. But again, the larger firms, when they are coming with the new brands, new materials, new components, your simulation test has also become very essential to understand that what is the your performance, so that we can ensure the targeted customers in those areas. Present trends is towards mass customization and personalized specifications. And mass customization, earlier it was the customized shoes have been there in the international segment for last so many years, whereas in India now also it is a new area, but the mass customization has been becomes more visible nowadays. We know that for again garments there is not a problem if little bit fitting is being done or not, is been we are satisfied or not, we can manage with that. But a pair of shoe, if it cleanses, definitely no customer is going to use. Not only that, even it will affect the brand image. So now the major brands are thinking about the customized products in terms of sizes. Fitting sizes means the length of the foot, and fittings, that is width of the foot, look, and we know that our bottom profile of the foot is different. And never ever, as on date, in Indian market, it is being given any priority. Whereas a flat foot customer will be having the problem while using a footwear which is having the different contour. That's why customized shoes are the call of the day. And we at the CFTI, it is our proud privilege, we have started that customized shoe process in our design studio, wherein the foot is being scanned to its different parameters. Its length, its width, and the other contours, other curves, and accordingly, the last shoe last, which is known as forma, is being made. And again, as per the customer's requirement, the sketching can be done with modifications of the different patterns, different colors, even different materials, including other materials also. So those things are being taken into consideration while developing the patterns. Then trial is to be made, and finally a customized pair of shoe can be given to the customer so that the esteem feeling can be improvised. For that purpose, that emerging technology in our footwear field is being considered in these categories. Number one is advanced Cad Cam system, like we are talking about a customized shoe and individualized preferred shoes. Advanced Cad Cam system has come into picture. Here we are capturing the shape of the foot and at different points. Then the last being made, like we have already discussed, and the shoes are being made. This is also being done for our shoe industries. Earlier, what was happening, if a buyer is in USA, he has to see some samples. Either they will send some samples,
samples has to be made in India, and it has to be again sent back to them. Unless until they see the physical samples, it was very difficult for them to take a decision, and they will send some modifications, and accordingly the patterns are developed. At the same times, in many of the industries, the international designers and their representatives are placed in different export-oriented industries. They have to develop the samples physically, and then and there they will correct and they will do it. But now the advanced Cad Cam system has come into the picture. Here directly the 3D, the virtual picture, virtual sketch is being done, like we have discussed, in from 360 degrees. It can be rotated, it can be visualized, and necessary modifications can be done within few hours of time. Once it is being finalized, then the patterns are being developed, it is being graded. Not only that, with this advanced suited designing system, a complete tech pack can be given with all different specifications which can be adhered in the production line. So it has reduced this tooling time, it has been reduced this designing time. So you will be surprised to know, while it was taking sometimes 30 to 60 days, this process, now it has 1 or 2 days that work can be completed following this advanced Cad Cam system. Advanced machinery and equipment is a continuous process of development in the shoe industry. In India, we are having very good workforce. So that's why our development in the terms of machinery and equipment, it is very slow, undoubtedly. Whereas the countries like Italy, UK, France, Germany, etc., they have gone quite ahead because their manpower is very costly. So all now and then, advanced machineries and equipments are being developed in India, balancing with our strength as far as the workforce is concerned. We are adapting, and we are also going ahead to adapt to have the advanced machinery equipments, and these machineries and equipments now are mostly programmable, so that the same machine, only by some changes in the programs, the same machine can very quickly, it can be adjusted to other designs and categories of shoes. The materials and accessories also, lot of changes, lot of improvements, lot of developments are being happened. It is now towards the non-leather materials, especially upper material. Upper material as such, leather is also very is preferred raw material, upper material as far as the Indian market is concerned. But not only India now, even in the global markets, the requirement, the need of the shift towards non-leather products, especially PU coated fabrics, polyurethane coated fabrics and polymerics have been increasing. Not only that, the knitted fabrics, the fabrics has come, and the knitting technology, advanced knitting technology, customized different types of upper materials are being generated. So the development in the areas of materials and accessories have gone to different heights. 3D printing is one of the very emerging trend as far as the footwear technology is concerned. We have seen that especially Paralympics, where the players are using the suits, especially running suits, and even our footballer suits. There what happens, the spikes
has to be customized because the bottom profile of the foot is not uniform like any other common man, and customized spiking systems will be there. And the Paralympics has created that opportunity to go for customized shoes. Dr. Sav, we are running short our program. Another 3 minutes? Yeah, sure. Fine, 3 minutes. So we are 3D printing technology come into the picture, not only for the full shoe like Adidas, they have also started in the production of 3D shoes, but also different components, customized components are being also being developed. Virtual reality, both in designing and marketing promotion is very important while shopping in the retailers. Now, Industry 4.0 in the worldwide, it is coming to the pictures with collaborative robotics and artificial intelligence. We know hundreds of raw materials, components, and accessories are being used in order to ensure the requisite parameters in terms of temperature, pressure, dwell time. The robotics and artificial intelligence has become more instrumental. So these are the emerging technology where we should work more onto it. As far as the career opportunity is concerned, as we have told, the shoe industry is a labor-intensive industry, ample scope of employment. Job potential is there for everybody, even uneducated or less educated person to highly educated professionals and management experts are required, are involved in this industry, and footwear sector is one of the very good paying industry. Package up to 40 to 50 lakhs is also there in this segment. Possibility of own business ventures are equally possible, like ancillary units or job work units for the large buyers, large industries, manufacturers and suppliers of footwear materials, components like uppers, soles, etc. Footwear manufacturing for the domestic product, footwear manufacturing for exports. Even now, these online shoe marketing houses are also have been developed in this COVID-19 area. It has been developed and it is growing like anything. And retailers, traders, and buying houses are equally possible if you are talking about the business opportunities. With this, thank you very much for giving me the opportunity. Thanks a lot. If any question, I can take very quickly. Thank you very much, sir, for delivering your very nice lecture. Definitely, our trainees, participant, and others will get benefited by getting various type of training programs and other technologies, future technologies in the field of footwear technology. So now we have next lecture from Dr. P.C. Bargle, sir. Sir is the head of the department, Technology Transfer Division, former head of the department, Technology Transfer Division, and principal investigator, Zonal Technology Management Unit, ICR Institute, Central Institute of Agricultural Engineering, Bhopal. Sir having more than 35 years of research experience in the field of technology transfer, and he has published many research papers in the field of technology. After research work, he has developed many things in the field of technology. So on behalf of MPCST and our organizers, we are request to kindly deliver your valuable lecture. Sir, please. Sir, excuse me, sir. This is Sanatan Sahu. With your kind permission, I may leave, please. I have some other meeting. Yes, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Allow me, sir. I'm sorry. Sir, voice नहीं. सर आवाज नहीं आ रही बरगले सर. ओके, हाँ जी, नमस्कार. अभी आवाज आई आपको? Yes, sir. ओके ओके. आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार जी, वाइस चांसलर RGPV, डॉक्टर कोठारी, महानिदेशक MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
Dr. Tiwari, Dr. Sahu, Dr. Chaube, Dr. Garg, and सभी dignified participants. At the outset, I thank the organizers for inviting me for this opportunity to share with you all what in agriculture sector, what is the present status, what are the technologies, and where we are going, and what we need to do so that it is sustainable and और भारत के जो आत्मनिर्भर बनने के दिशा में जो स्टेप्स की जरूरत है उसके बारे में I think Hindi and English mix is okay, right? है ना? Hindi is also okay, right? Sure, as you wish. Yes, sir. Okay, so this is the topic. As I recently retired from Central Institute of Agriculture Engineering, Bhopal, which is one of the ICR Institute, Indian Council of Agriculture Research, which has about 108 institutes all over India. And Indian agriculture research is world's largest scientist involved in agriculture in one organization. And that is the reason India is Atma Nirbhar in agriculture today. We can say with proud कि पिछले 2 साल for last 2 years during COVID, 80 crore people of India were fed by government of India, those who are BPL. We have sufficient stock of food grains, and in the crisis of the Russia-Ukraine war, India is being looked who will supply wheat to the world, who will feed the world. So this is our opportunity from time of independence, when our Prime Minister had to go to White House to bag some wheat so that we can feed to our population. उस समय से आज के समय में जब इंडिया पूरी दुनिया को फूड देने की स्थिति में है, कई फूड क्रॉप्स में हम लोग नंबर 1 है, कई में नंबर 2 हैं, और अभी यदि 1-2 साल भी ये वार चले, इंडिया को फूड क्राइसिस की संभावना कम है, तो कई हम लोग आत्मनिर्भर हैं। ये हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है। इसके लिए आईसीआर का बहुत योगदान है, किसानों का बहुत योगदान है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ करने की जरूरत है। जैसा अभी हमारे जो चीफ गेस्ट साहब थे उनने भी बोला था कि हमारे इंडिया में फूड की कमी नहीं है, फूड ग्रेन की कमी नहीं है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की कमी नहीं है। प्रॉब्लम है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमारे बहुत हो रहे हैं। तो मैं इसी के बारे में अपने आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं, थोड़ा समय कम हो जाएगा शायद, लेकिन ये इंडिया का जो मेन एग्रीकल्चर इज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया। आप इंडिया की कल्पना बिना जबकि अभी सिर्फ 14% जीडीपी में इंडिया एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, जो कम होता जा रहा है, लेकिन स्टिल इंडिया की 55% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर और उसके जो कमोडिटीज है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, ये सब जो मिला के एक आता है सेक्टर, उसको हम इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। तो उसमें तो मेरा जो प्रेजेंटेशन का प्लान है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले व्हाट इज द सीन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टुडे एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। एंड हम लोगों का इंस्टीट्यूट जो भोपाल में है वो मेनली फोकस करता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज पे। उसके बारे में मैं बताऊंगा, वो क्रॉप प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है, एग्रो प्रोड्यूस प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन की है, फूड प्रोसेसिंग भी उसमें आता है, एनर्जी फ्रॉम एंड फॉर एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो द टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्री बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, सो दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, एंड ऑल्सो लुकिंग इंडिया बिकम self sustainable in food processing sector also. So now coming, as you know, India का lifeline agriculture है, 140 million hectare है। अभी we have made lot of progress. It provides livelihood to about 60% of the population. India का 13% GDP है, और India food production last year was 310 million tons. Fruits, इसके अलावा in addition to food grain, we have 99 million tons of fruits and 192 million ton of vegetables. And India की land holding ये है, और India is the second largest producer of the fruits and vegetable in the world. India's share in world production of fruits is about 11% for fruits and vegetable, and also largest producer of mango, banana, guava, papaya, lemon, lime, okra in the world, and second largest producer in top, called tomato, onion and potato, cabbage, cauliflower, brinjal in the world. So ये हमारा scene है,
और सिंस जैसा मैंने आपको बताया कि 1951 को यदि हम बेस ईयर माने इंडिया का, तो इंडिया ने काफी हद तक हम लोगों ने काफी प्रोग्रेस किया है। 6 टाइम्स हमारा फूड प्रोडक्शन हुआ है। इंडिपेंडेंस के टाइम 51 में 50 मिलियन टन था, आज 306 मिलियन टन है। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमारे देश में फूड सेल्फ सफिशिएंसी आई। हम दूसरों पे निर्भर नहीं है कि जब तक इंपोर्ट नहीं होगा, जैसे हम ऑयल के मामले में, क्रूड ऑयल के मामले में, वी आर नॉट लाइक दैट। हॉर्टिकल्चर में हमारा 13 टाइम्स प्रोडक्शन हुआ है, 25 मिलियन टन होता था, तो पिछले 70 इयर्स में 331 मिलियन टन तक हुआ है। और पिछले 7-8 साल में करीब 50 टन हुआ है। और अभी जो गवर्नमेंट भारत सरकार है, उनका है कि हमें सिर्फ फूड प्रोडक्शन और फूड प्रोसेसिंग नहीं देखना है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पे भी फोकस करना है। तो इसीलिए जो भी हमारे इस सेक्टर में काम करने की जरूरत है, उसमें एक तो सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, एक बार प्रोडक्शन बढ़ गया तो कम नहीं होना चाहिए, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज मेंटेन हो रहने चाहिए, सॉइल, वाटर, हेल्थ, एग्रो, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, ये सब अभी डिटीरिएट हो रहे थे। इसके क्या कारण है, मैं आई विल कम टू दैट। देन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, unfortunately India may still 33% of the children are malnutrited and our population, and despite the fact that we have lot of food getting spoiled in warehouses, poor storage, and it is not reaching to the targeted group, वो उसमें कमी है, but government is making lot of schemes, and so agree जैसा, but there are problems in agriculture sector India में। There is main problem, as everybody is saying कि किसान, we have to double the farmers income or maybe now triple, as our chief guest also said correctly कि कोई डबल होने से तो ओनली इन्फ्लेशन कवर होता है। 5-6 साल में वैसे ही महंगाई इतनी हो जाती है कि डबल प्राइस से उनके रिटर्न्स कम हो जाते हैं। तो हमारे जो एग्रीकल्चर में आप जानते हैं जो भी इनपुट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, इसीलिए एग्रीकल्चर इज नो मोर ए प्रॉफिटेबल बिजनेस और प्रपोजिशन फॉर आवर फार्मर्स। जैसे आप देखें एग्रीकल्चर में क्या लगता है, लैंड, वाटर, सीड, फर्टिलाइजर, केमिकल, एनर्जी, लेबर, मशीनरी, ये सब चीज महंगी हो रही है बिकॉज ऑफ ऑल द रीजन दैट यू नो। तो इसीलिए जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब 100 टन वीट प्रोड्यूस होता है फील्ड में, तो उसमें ऑलरेडी फार्मर हैज पुट सो मच ऑफ कॉस्ट कि रिटर्न्स आर नॉट कमिंग। सो अनलेस वी मेक फार्मर प्रोसेसर ऑल्सो एंड लिंक इट टू द इंडस्ट्री, जैसा कि हमारे जो 3 बिल आ रहे थे, अनफॉर्चुनेटली दे गॉट स्टक अप, अदरवाइज इट वाज दोज वर वेरी गुड बिल्स टू एनहांस फार्मर्स इनकम एंड ऑल्सो गिव ए बूस्ट टू इंडियन इकोनॉमी। और उससे इंडिया का एग्रीकल्चर एकदम से काफी उसको बूस्ट मिलता, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन बढ़ता, एक्सपोर्ट बढ़ता, क्वालिटी आती, फूड सेफ्टी आती। लेकिन एनीवे इट इज पार्ट ऑफ द process. Government I think will find some other ways to help farmers, and अभी हमारे post harvest losses बहुत ज्यादा हैं इंडिया में। You would be surprised to know कि इंडिया में 92,000 करोड़ रुपीस का फूड ग्रेन हम लोग लूज कर देते हैं फ्रॉम फील्ड टू डाइनिंग टेबल या फार्म टू प्लेट या फार्म टू फोर्क एज इट से। उस बीच में बहुत लॉस है, चाहे फील्ड में होते हो, ट्रांसपोर्टेशन में होते हो, मंडीज में होते हो, घरों में हम लोग वेस्ट करते हो, तो इट्स ए ह्यूज लॉस। क्योंकि एक पैदा की हुई चीज को लॉस कर देना डबल लॉस होता है, कितने एनर्जी, कितना रिसोर्सेज, कितना सब लगते हैं, और हम लोग उसको लूज कर ओनली। और इंडिया में प्रोसेसिंग बहुत कम है, फूड प्रोसेसिंग, जबकि कंपेयर टू स्मॉल कंट्रीज लाइक आप देखिए थाईलैंड है, मलेशिया है और ये जापान है, इनका फूड प्रोसेसिंग 90% तक है और इंडिया का 10, 12, 15% तक है। अभी गवर्नमेंट के एफर्ट से कुछ बढ़ रहा है। So there is need to focus on food processing sector, and government of India has done a very good job. Lot of schemes have come और agriculture sector को boost देने के लिए RKVY स्कीम आई है, और अभी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF क्रिएट किया गया है, हर स्टेट को दिया गया है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो, चाहे गोडाउन हो, कोल्ड स्टोरेज हो, रोड्स हो और प्रोसेसिंग प्लांट्स हो, उसको देने के लिए गवर्नमेंट ने AIF क्रिएट किया है, जो कि 1 लाख करोड़ का है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। एंड अनदर थिंग, एज आई सेड, न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज आल्सो कॉज ऑफ कंसर्न, व्हिच लीड टू लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम टू आवर पॉपुलेशन, देयर फिटनेस आल्सो, एंड आल्सो चैलेंजेस जो इंडियन एग्रीकल्चर के हैं कि इट इज डिक्लाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी इन एग्रीकल्चर। इट इज ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एज आई सेड कि हमारे सब इनपुट की कॉस्ट हाई है,
low levels of productivity. We have done good job, but still there are a lot of scope. Subsistence farming rather than professional enterprise. हर किसान सोचता है मेरा प्रोडक्शन हो गया, मेरा फैमिली हो रहा है. इंस्टेड ऑफ दैट उसको पर एकड़ यदि वो सोचेगा कि नॉट ओनली मुझे अपनी फैमिली बट इंडिया के उसके हिसाब से इतना प्रोड्यूस करना है कि उससे उसको भी इनकम हो और नेशनल इंटरेस्ट में भी उसको अपनी एफिशिएंसी और वो बढ़ानी है. लेकिन फार्मर की भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके इनकम और लोन लेते हैं तो रिटर्न करने की. और एग्रीकल्चर में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अनसर्टेनिटी ऑफ क्लाइमेट, वेदर, साइक्लोन्स एंड मार्केट. अभी आप देखते हैं कई बार, अभी देखिए नींबू लेमन का रेट आपने देखा कहाँ चला गया. और ये जो 4-5 चीजें हैं टॉप जिनको बोलते हैं, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, इनमें से एक ना एक की कीमत तो आप देखते हैं कभी 2 रुपए बिकती है तो कभी 80 रुपए 100 रुपए किलो हो जाता है. तो इन सबको एड्रेस करने के लिए प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी है, ताकि हम उस सीजन में उनको प्रोसेस्ड फूड के रूप में ले सकें और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाए तो उनको हम पैकेज करके उनको मार्केट कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें. उस लेवल की क्वालिटी हमको बनानी पड़ेगी, है ना. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम लाई है. अभी पिछला साल जो था 2021 को यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप डिक्लेयर किया था. उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें 10 फ्रूट्स उनने एक्सोटिक जो कि इंटरनेशनल इंटरेस्ट के हैं वो है, जो मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं, वो आइडेंटिफाई किए थे. और हर स्टेट गवर्नमेंट के हॉर्टिकल्चर मिशन को बोला गया है कि आपको इन पे फोकस करना है. तो इसमें जो एक्सोटिक फ्रूट है उसमें तो अपने एमपी का स्कोप उतना इज नॉट विजिबल. But if you see the second niche food crops, if you see आंवला, करोंदा, अब ये सी बकता है ना, बट गार्सिनिया, जामुन, हनुमान फल, बेल, टैमरिंड एंड फालसा एंड जैक फ्रूट, ये हमारे एमपी में इसमें से काफी 5-6 फ्रूट ऐसे हैं जिन पे एमपी फोकस करके प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन करके इंडियन नेशनल विद इन द स्टेट, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे इसकी मार्केटिंग करे. इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सा सपोर्ट डिक्लेयर किया है. और इंडिया का जो मेजर एक्सपोर्ट रहा है ड्यूरिंग पैंडेमिक, ये इंडिया टुडे इज 5th लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग वेजिटेबल सीड मार्केट. जो हमारे आईसीआर से बहुत से नए सीड निकलते हैं उनकी बहुत डिमांड है, विच इज अबाउट 6 बिलियन रुपीज है. तो हॉर्टिकल्चर आइटम्स में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ये इतना हम करते हैं. टोटल एक्सपोर्ट अबाउट 48,000 करोड़ रुपीस का है ना. तो अभी सो ऑल सेड दैट production is sufficient, but we have to reduce post-harvest losses, enhance processing and value addition, focus on quality and safety in food. हमारे इंडिया के फूड को कई बार एक्सपोर्ट मार्केट में that is rejected on seaport because of the quality issues. उसमें कभी केमिकल ज्यादा हो जाता है, उसकी रेंसिडिटी उसमें हो जाती है और उनको ऑल्सो कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं. तो इट इज सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट कि हमारा फूड विच एवर गोज टू फॉर एक्सपोर्ट इज सेफ एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. एंड इसमें नेशनल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी फोकस में होना चाहिए. आजकल आप इफ यू गो टू एनी फूड मार्ट और आप चाहे बिग बाजार जाएं, हर जगह यू विल सी they are focusing on health issues, particularly after this pandemic. आप चाहे जैसे मिलेट हमारा एक प्रोडक्ट है जिसकी बहुत अच्छा उसमें कैल्शियम है, उसका उसमें उपयोग हो रहा है. हर those who can afford वो देख रहे हैं कि कैसे हम अपनी हेल्थ को बेटर करें, इम्यूनिटी बढ़ा सकें, so that we have less health problem and if there is pandemic we can survive ourselves. ये तो अभी सब आप जानते हैं. लॉन्चिंग अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हनी को एक बहुत बड़ा मिशन बनाया है और उसको इंटरनेशनल भी बना के कि इंडिया को हनी का बहुत पोटेंशियल है, इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए. इसकी बहुत सी ट्रेनिंग और एमपी में भी इसका बहुत स्कोप है. हनी बी कीपिंग, इसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है. तो ये मेरा जो इंस्टीट्यूट जहां से मैं अभी रिटायर हुआ है, आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसका पर्पज यही था, यूजिंग इंजीनियरिंग in agriculture, how we can increase productivity, profitability and sustainability. ये तीनों बड़े critical points हैं. हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, प्रॉफिट भी बढ़ाना है और सस्टेनेबल भी बढ़ाना है. ये बड़े चैलेंजिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन यही एक इंजीनियरिंग का हमको यूज करके करना है. हमारे इंस्टीट्यूट, इफ यू any one of you who has not visited, I request you take time to go there. Very huge campus, 225 acres of land on Bhasia Road, and about 44 years old institute. 1976 में बना था, 46 years हो गए. And it has got सभी मशीनरी से रिलेटेड कोई भी आपका प्रॉब्लम हो या आपकी रिक्वायरमेंट हो, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज बनी है. You can also visit our website, वहाँ ये सब मशीनों की डिटेल है. I will tell some of them. तो हमारे इंस्टीट्यूट का जो मेन मैंडेट है, इट इज फार्म मैकेनाइजेशन, मतलब प्रोडक्शन एग्रीकल्चर. जब एग्रीकल्चर शुरू करता है कोई, लैंड प्रिपरेशन, सोइंग, हार्वेस्टिंग,
ना इंटरकल्चर ऑपरेशन एंड देन पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। वहां तक जब तक प्रोडक्शन नहीं होता तब तक मतलब आप सीड बोने से लैंड प्रिपरेशन से लेके उसको प्रोडक्शन एग्रीकल्चर भी कहते हैं, वहां जो मशीनरी लगती है उसको फार्म मैकेनाइजेशन भी लेते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा जो है एक्चुअली एग्रो प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट फूड प्रोसेसिंग, जिसमें जो हमने प्रोड्यूस किया उसको कैसे हम प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन करके स्मॉल डोमेस्टिक लेवल पे, स्मॉल स्केल लेवल पे, रूरल लेवल पे और लार्ज स्केल पे भी हम कैसे उसको प्रोसेस करके प्रिजर्व कर सकते हैं, उसकी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं और खाने के लायक बना सकते हैं। देन आवर अनदर डिपार्टमेंट इज इरिगेशन एंड ड्रेनेज। मेन थीम इज मोर क्रॉप पर ड्रॉप। उसमें कैसे हम पानी की, क्योंकि आप जानते हैं पानी की क्राइसिस को बारे में बोलना की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज। अभी हम लोग 15 रुपए लीटर पानी पीने के लिए मिल रहा है, आगे हमारा क्या रेट होगा पता नहीं। तो इसके लिए हमको ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जिसमें पानी का वेस्टेज मिनिमम हो। इसीलिए आप देखते होंगे हर जगह आजकल स्प्रिंकलर आ गए हैं, ड्रिप इरिगेशन आ गया है, तो उसमें उतना ही पानी दीजिए जितने की जरूरत है। एनर्जी मैनेजमेंट, जैसा आप जानते हैं अभी एनर्जी फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर, जैसे आप जानते हैं दिल्ली के में ड्यूरिंग नवंबर टू फरवरी इतना हमारा एनवायरनमेंट खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, कि वहाँ दिल्ली जैसी जगह में जहाँ वीआईपी रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, वहाँ भी कई बार स्कूल बंद करने पड़ते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इसको एड्रेस करने के लिए बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट हमारे आईसीआर का हुआ था एंड पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के साथ। उसमें बहुत सी मशीनरी के इंटरवेंशन से जो भी क्रॉप रेसिड्यू है उसको फील्ड में मिलाना से उसको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं, जिससे नेचर का रिसोर्स नेचर में ही चला जाए, उसको जला के उसको कार्बन बना के एनवायरनमेंट में कार्बन, सॉइल में कार्बन करके हमारा किसान 2-3 साल तो उसको लगता है कि बहुत आराम से हमारा ये हमने जला दिया और हमारी खेत साफ हो गया, लेकिन 5 साल बाद उसका प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा क्योंकि उसके सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर गेटिंग ही डजंट नो अबाउट इट। तो हमको उसको एजुकेट करके उसको टेक्नोलॉजी देके उसको सपोर्ट करना है। इसके बाद आजकल आप देखते होंगे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें ग्रीन हाउस या नेट हाउसेज आप देखते होंगे जब आप व्हेन यू गो आउट ऑफ सिटी। इसको भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है। इसमें कम एरिया में क्वालिटी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उगाने की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। इसकी ट्रेनिंग भी हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी होती है और कई हमारे यहाँ एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी है, जिसमें फार्मर हो चाहे अनएम्प्लॉयड यूथ हो, क्वालिफाइड हो, कोई भी आके उस फैसिलिटी का उपयोग कर सकता है। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और क्यों हमको टेक्नोलॉजी की जरूरत है मैं आपको बताऊं। अभी जो बेसिक चीज है, अभी हमको precision agriculture is the technology which is important and which should be followed. Precision agriculture means to use input at the right time, right place, in right quantity. सही इनपुट, जैसे पानी हो, चाहे सीड हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे लेबर हो, चाहे मशीन हो, उतना ही उपयोग करिए जितने की जरूरत है। डोंट वेस्ट दीज थिंग्स। जब हम ये, और उसके लिए जरूरी है कि मशीनें हो, मैकेनाइजेशन हो। अब आप देखते होंगे ड्रोन आ गए हैं, रोबोटिक्स आ गया है, इन सब की जरूरत है। लेकिन बेसिक एग्रीकल्चर जो हमारा फार्मर है उसको हमको, तो हमें जो इसीलिए मशीन और टेक्नोलॉजी की जरूरत है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की जरूरत है, जिसमें नो इनपुट इज वेस्टेड, क्योंकि हर इनपुट महंगा है जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूं। तो टाइमलीनेस ऑफ ऑपरेशन, these all will come through machine, efficient application of input, conserving soil and water resources, increasing irrigation potential and efficiencies, reducing losses, drudgery and pollution, increasing cropping intensity, efficient use of input resource एंड प्रिवेंशन ऑफ लॉसेज। जैसे मैंने कहा हमारी जो 5-6 इनपुट है, इनको हम सही समय पे सही मात्रा में है ना सही लगा दें यदि, तो हमारी आधी प्रोडक्शन कॉस्ट तो वहीं कम हो जाती है। अभी बहुत वेस्टेज होता है, चाहे पानी का हो चाहे लेबर का हो, और हमें लेबर को भी मशीनों के थ्रू उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी, उसकी ड्रजरी कम करनी है। दिन भर में यदि वो काम करके 500 रुपए कमाता है, 400 रुपए भी उसको मिलते हैं, तब भी उसकी लाइफ उससे नहीं चलने वाली। तो हमको अपने सब इनपुट का एफिशिएंट यूज करना पड़ेगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। हमारे एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी है, मैकेनाइजेशन भी बहुत बड़ा है। 1951 में टोटल इंडिया में 8,500 ट्रैक्टर थे, आज 87 लाख, करीब 88 लाख समझ लीजिए, इतने ट्रैक्टर हैं
इंडिया में ट्रैक्टर, आपको पता होगा कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ट्रैक्टर्स इन द वर्ल्ड। एक समय में इंडिया में सब इंपोर्ट होते थे, लेकिन हम लोग नॉट ओनली हम आत्मनिर्भर हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। करीब 90,000 ट्रैक्टर इंडिया हर साल एक्सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज को, अफ्रीकन कंट्रीज को। बहुत अच्छे ट्रैक्टर इंडिया में बन रहे हैं, जैसे महिंद्रा है, अभी तो जॉन डियर भी आ गए हैं, हॉलैंड ट्रैक्टर्स भी आ गए हैं, स्वराज भी है, आप देखते होंगे पेपर मैट। इसके अलावा पावर टिलर है, 64-65 में 1300 थे, अभी 7 लाख से ज्यादा है। इलेक्ट्रिक मोटर्स जो थी इंडिपेंडेंस के टाइम 0.2 मिलियन थी, अभी 20.4 मिलियन हो गई है। फार्म पावर, जो खेतों में जो पावर लगती थी उस समय 61 में 0.31 किलोवाट थी, अभी हो गई है 2.76 किलोवाट। तो लॉट ऑफ, और अभी एनिमल और ह्यूमन एनर्जी का यूज इज रिड्यूसिंग वेरी फास्ट। सो चैलेंज इज वी हैव डन good mechanization, efficiency has increased, production has increased, but there is opportunity to do. So some technologies I will go very fast because farmers are not in this meeting. तो मैं एक idea दूंगा for land preparation. Our machineries are such that they can be adopted by one smallest farmer, because still average land holding of Indian farmer, 80% farmer have less than 1 hectare of land. So they are small farmers. We have to, and they are poor also. So we have to develop technologies which can address which can help them. Because those who are rich and have large land, they have lot of other resources to help themselves, and they can take loan also. But this poor farmer who have limited land and they have to live, their whole family has to live on it. So ये small machine हमने बनाई है, but modernization also. जैसे if you will take this land laser leveler, ये इतनी अच्छी मशीन है, दिस हैज रिवोल्यूशनाइज्ड इंडियन एग्रीकल्चर। इसमें आपको इसका मैं हाउ इट अफेक्ट्स, एक्चुअली लैंड लेवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्लियर आप देखते होंगे कि हाफ ऑफ द लैंड इज वेट एंड हाफ इज ड्राई, क्योंकि लैंड वाज नॉट लेबल्ड। अभी इस मशीन से ऑटोमेटिकली लेजर एक लगा रहता है, इससे दिख जाता है कि कहाँ कितना मशीन करना है। वंस यू लेवल द लैंड, फिर आपको पाइप की भी जरूरत नहीं है, तो आपका पानी वेस्ट नहीं होता। उस समय पानी आधा खेत सूखा रहता था, आधा गीला। वंस यू लेवल द लैंड यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, पूरे इंडिया में ये एक्चुअली 14 लाख की मशीन आती थी 1984 में। फिर इंडिया वालों ने इसको इंडियनाइजेशन करके आज ये 3 लाख से भी कम रुपए में बहुत से मैन्युफैक्चरर बना रहे हैं, और हर जगह लैंड लेवलिंग करके वी आर सेविंग लॉट ऑफ वाटर एंड प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग। सो ये इस तरह के इंटरवेंशन से, पावर टिलर है। अभी दोज फार्मर्स हु कैन नॉट अफोर्ड ट्रैक्टर, दे कैन यूज पावर टिलर्स। अभी जरूर इंडिया में बहुत से पावर टिलर आपको चाइना के मिलेंगे, लेकिन अभी 6 कंपनियां आ गई हैं जो इंडिया में आत्मनिर्भर के हिसाब से वी आर मैन्युफैक्चरिंग अवर ओन पावर टिलर। स्लोली टारगेट इज की बहुत सून, मे बी 5 years में इंडिया पावर टिलर में भी अच्छा करने लगे, क्योंकि चाइनीज के सस्ते होते हैं, जैसा हर सेक्टर में है। तो इंडियन फार्मर की लिमिटेशन के कारण वो सस्ते में जाता है। और ये देखिए कैसे ये है। तो ये लैंड लेजर लेवलर जिसकी मैंने अभी बताया, इसकी कीमत और भी कम हो गई है। बहुत एफिशिएंट मशीन है। ये मशीनें हैं, इनमें फायदा ये होता है कि आपका सीड वेस्ट नहीं होता, बहुत फास्ट ऑपरेशन होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत कम समय मिलता है सोइंग करने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए, इंटरकल्चर के लिए, पेस्टिसाइड। तो मशीन होगी तो फटाफट हो जाएगा और एफिशिएंटली होगा, वेस्ट नहीं होगा। आपको लेबर नहीं मिलती है। मेन प्रॉब्लम इन रूरल एरिया नाउ डेज इज कि अभी लेबर नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है लेबर। तो जब आपको पीक जरूरत होती है सोइंग में, तो सभी गांव वालों को उसी समय सोइंग करनी है, तो लेबर नहीं है। तो मशीन इज द ओनली वे लेफ्ट, मैकेनाइजेशन इज द ओनली वे लेफ्ट फॉर डूइंग एग्रीकल्चर, चाहे वो छोटी मशीन हो। ये जहां बहुत पानी भर जाता है, ड्रेनेज के लिए ये मशीन बनाई है, जिससे बिना पाइप के खेत का जो ज्यादा वाटर है वो बाहर निकल जाता है। ये छोटे छोटे टूल है जो फार्म में लेडीज बैठ के करती थी, उनकी ड्रजरी रिड्यूस हुई है, इनको बैक एक और हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होते हैं। ये खड़े होके वॉक इन टाइप वीडिंग कर देते हैं, क्योंकि बहुत से वीड उगते हैं, तो ये उसके लिए है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड भी है, मशीन से चलने वाला, ये हाथ से चलने वाला। ये देखिए खेतों में जब हम सोइंग ठीक से करते हैं, लैंड रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन है, उसमें ट्रैक्टर भी चल जाता है। इसीलिए सीड ड्रिल से, ट्रैक्टर से आपको सोइंग करने के बाद, तो ये मशीन बनी हुई है इसमें। और ये पैडी के लिए भी बहुत सी टेक्नोलॉजी आई है, क्योंकि खेतों में पानी में खड़े होकर लेडीज काम करती थी या लेबर काम करता था, तो उनको बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम होती थी। तो ये ऐसी छोटी छोटी हर लेवल की मशीन अभी बन गई है। ट्रैक्टर तो एक अलग चीज है, ट्रैक्टराइजेशन
इज डिफरेंट मैकेनाइजेशन। अभी जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे महिंद्रा है, जॉन डियर है और हॉलैंड ट्रैक्टर्स है, ये और टैफे है, ये सभी लोग अब इक्विपमेंट बनाने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे टूल हैं जिनका हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं खेतों में, कोनो वीडर, तो इससे टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन हो रहा है। लेकिन स्टिल देयर इज, और ये जैसे देखिए आप जो कह रहे हैं नई टेक्नोलॉजी, ये एक एनडीवीआई बेस्ड यूरिया एप्लीकेटर है। इसमें एक सेंसर लगा हुआ है जिसको देख के जो क्रॉप का कलर है वो ग्रीननेस से वो डिसाइड कर लेता है कितना यूरिया डालना है कितना नहीं डालना है। यदि बहुत ग्रीन है तो कम यूरिया डालेगा, है उसका, तो ऑटोमेटिक ये कंट्रोल हो जाता है। ये है मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसकी अडॉप्शन। सबसे जो बिगेस्ट टेक्नोलॉजी अभी डेवलप और हुई है, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो फोकस कर रही है, मृदा परीक्षक है। सॉइल टेस्टिंग का जो एक हमारा जो एक सिस्टर इंस्टीट्यूट है भोपाल में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, उन्होंने एक मृदा परीक्षक बनाया, कई इंस्टीट्यूट ने बनाया। उससे सॉइल हेल्थ कार्ड को गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है, जिससे आप सॉइल में वही न्यूट्रिएंट डालें जिसकी उसको जरूरत है। जैसे हम लोग अपना ह्यूमंस का भी ब्लड टेस्ट कराते हैं, यदि आयरन की कमी है तो आयरन की कैप्सूल लिखता है डॉक्टर, या कैल्शियम की कमी। उसी तरह से अभी ये जो सर्वे हुआ है, सॉइल सर्वे, उसमें पता चला कि लोगों के खेत में नाइट्रोजन इज 4 times देन व्हाट इट शुड बी, बिकॉज दे वर सीइंग कि बाजू वाले ने दो बोरी यूरिया डाला, उसका प्रोडक्शन बढ़ा तो मैंने 4 बोरी डाल दिया। तो यू डोंट नीड नाइट्रोजन एट प्रेजेंट, जब उसको अगले 2 साल 3 साल का उसमें ऑलरेडी स्टॉक है। यदि हमारी बॉडी में विटामिन कुछ ज्यादा है, आयरन ज्यादा है, और हम आयरन की कैप्सूल खाएंगे, इट विल हार्म योर बॉडी। सेम वे सॉइल के साथ, इसीलिए अभी आप देख रहे हैं कि बहुत केमिकल फर्टिलाइजर के यूज से सॉइल का नेचर का बहुत लॉस हो रहा है और किसान की कीमत बढ़ रही है। अननेसेसरीली हम लोग डाले जा रहे हैं, उसकी जरूरत, उससे प्रोडक्शन, अब वो सॉइल जो है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और स्टेगनेट हो गई है। तो ये जो वीसी साहब भी कह रहे थे कि हमें टेक्नोलॉजी को इंटेलिजेंटली अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज करनी है, उसके लिए ये ऐसे सेंसर, हमें सॉइल हेल्थ देखिए उसका, और सॉइल हेल्थ कार्ड में आपको 14 जो उसके मिनरल है उनकी फटाक से आपको 24 घंटे में, इनफैक्ट जो पहले महीनों लगते थे, इस सॉइल हेल्थ कार्ड से आपको 14 जो कंस्टिट्यूएंट है उनका पता लग जाता है। तो अपनी हेल्थ, जैसे उसमें फास्फोरस की कमी है तो उतना ही दीजिए जितना कैलकुलेट करके, ऐसे ऐप भी बन गए हैं कि आप देख लें कितना परसेंट है, इतना करने के लिए कितना डालना पड़ेगा। ये देखिए इसमें स्प्रेयर्स जैसे आ गए। एक और जो प्रॉब्लम हमारे को हो रही है, अभी आपने सुना होगा 1-2 साल, आई थिंक 5 years बैक, ड्रोन्स क्यों आए इंडिया में एग्रीकल्चर। अभी आपको महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें 150 फार्मर्स डाइड व्हेन दे वर स्प्रेइंग इन द फील्ड बिकॉज दे वर नॉट नोइंग हाउ टू ऑपरेट दिस स्प्रेयर। सो वो जो इंसेक्टिसाइड था, पेस्टिसाइड था, दैट दे इनहेल्ड इज टू मच बिकॉज दे वर नॉट फॉलोइंग ऑल द प्रिकॉशंस। उन्होंने मास्क नहीं लगाया था और ओवर अगेंस्ट द एयर वो कर रहे थे। तो तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा दिस ऑपरेशन वी शुड डू यूजिंग ड्रोन्स, ताकि ह्यूमन लाइफ जो है वो सेव रहे और उनकी हेल्थ हैजार्ड ना हो। अभी ओवर स्प्रेइंग हो जाती है इसमें और अंडर स्प्रेइंग हो जाती है। अब आपको कीड़ा तो लगा है कुछ पेड़ों में, पूरे इसमें हम डाल रहे, सो दैट पेस्टिसाइड इज गोइंग इन सॉइल, इट इज गोइंग ऑन प्लांट, इट इज गोइंग इन द ड्राइवर बॉडी। तो इन सबको बचाने के लिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर में नाउ द सेंसर्स हैव कम। इफ यू विल सी सेंसर बेस्ड स्प्रेयर, दिस बॉटम दिस फिगर, you will see it will the sensor will identify in that plant tree where is the infection. It will insect, it will spray only at that point, only in that much quantity, only, not whole tree, otherwise it will go in air or some will go on earth, land, and that, and also it will, so this is causing lot of problems. So now precision in agriculture, sensor based sprayers have come where you will put exactly where there is infection, where how much quantity is required, and it will not be wasted. So it will reduce cost, it will improve the environment, and land also will be protected. So ये precision agriculture technology is the, जैसे इंट्रा कैनोपी ये है ना, because insects will always be there, but you have to, ये देखिए बुलक ऑपरेटेड सोलर पावर्ड स्प्रेयर भी बन गया है, क्योंकि एनर्जी इज ऑल्सो वन इशू। जितना आप ये कार्बन इकट्ठा होता है, डीजल जलाते हैं लोग या ट्रैक्टर भी चलाते हैं, तो इफ यू कैन यूज सोलर एनर्जी, दिस विल हेल्प स्मॉल फार्मर्स की, उनकी बैलगाड़ी पे ये सोलर ऑपरेटेड लगा हुआ है। ऑल्सो जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तोड़ने में वी आर यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, अभी ये मशीन बनी है जिससे दिस गोज अप टू 6 meters, तो वहां आप उसको तोड़ सकते हैं, नीचे फ्रूट गिरेगा नहीं, तो आप वेस्टेज नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, और प्रूनिंग भी कर सकते हैं, वहां पे स्प्रेइंग भी कर सकते हैं आप इस मशीन के माध्यम से। ये मशीन हम लोगों ने बनाई है और कई कंपनियां आप बनाने लगी हैं। तो इससे क्या हुआ कि आप और ये कई ऑर्चर्ड में यूज, और
ये देखिए कितने पास तक जाके आप तोड़ सकते हैं। तो वो फ्रूट जो पहले गिरते थे, टूटते थे, आधे तो खराब हो जाते थे, अपने आप ही गिर जाते थे, तो ये आप इससे बचा सकते हैं। ये स्प्रेइंग भी कर सकते हैं ऊपर चढ़ के जहां इन्फेक्शन है, इंस्टेड ऑफ कि आप, जो कि अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है, तो एक ही आदमी इसको ऑपरेट कर सकता है ना। तो जहां ऑर्चर्ड है, ये जैसे आप, मैंने बताया कि लोग स्ट्रॉ को जला देते हैं, तो उस स्ट्रॉ को कलेक्ट करने की मशीन है ये, और इसको इकट्ठा करके इसके बोर्ड बनाए जा सकते हैं। ये जैसे सोइंग और प्लांटिंग है, तो ये सब मशीनें सीड को सही समय पे सही मात्रा में और क्विकली लगाती हैं। इसमें सब हैं हैंड ऑपरेटेड से। अब ये मोस्ट मॉडर्न मशीन भी है, बीटी कॉटन प्लांटर, और ये सब न्यूमेटिक प्लांटर भी हैं, जिसमें छोटे सीड जैसे रेप सीड वगैरह होते हैं, उनकी भी बहुत अच्छी सोइंग हो जाती है। ये देखिए बहुत सी मशीनें आपको देखने को मिलेंगी जो ये देखिए प्री एमरजेंस जो हर्बिसाइड स्ट्रिप एप्लीकेटर है, इसकी खूबी ये है कि जब आप बोनिंग करते हैं तो पहले हम लोग सीड और फर्टिलाइजर डालते थे, इसमें पेस्टिसाइड भी डाल देते हैं, तो वो जो खरपतवार है वो उगता ही नहीं है। देयर विल बी no weeds grown in this field because so lot of labor cost is prevented and because there will be no weed because maximum cost of production goes in labor for removing weeds in the, so this machine is developed, pre-emergence herbicide strip applicator. ये machine है, pneumatic planter है, which precisely it will put one seed at one place. Earlier we were putting 4 or 5 seeds at one place, so it was harming, हमारा seed loss हो रहा था and the plants were not growing well. So these are the raised bed planter where there is less rain. You should use these machines so that this raised bed is there, and even if there is no rain or no water supply, this because of the raised bed, the moisture is retained in the soil. ये देखिए, because of the raised bed, you will see this crop, and next neighborhood mein without raised bed they were getting this. So these are seed fertilizer. Till now, nowadays this situation has come, precision has come, where some seed you have to put fertilizer above seed, and somewhere you have to put fertilizer above, and somewhere seed. So accordingly this machine can put seed above or 5 centimeter above or 5 centimeter, or also laterally also. So it depends on how that seed will spread after it goes in the soil. Accordingly we develop these machines. So there's multi-millet planters. Now millet has become, it was poor man's food, now it is rich man's food, because all are getting sick, lack of vitamin and minerals, so all rich people. So millet has got, suddenly the value has gone high, and everybody is looking for millet in their biscuits and bakery products and everywhere. So lot of machines is coming for millets. And tractor garlic planter, as you know, fruits and vegetable, this is for garlic planting. Also we have sugarcane planting. Lot of machines have. Vegetable is also important. Plastic mulch laying machine, because you know, once you put plastic, there are 2-3 advantages. It will conserve the moisture, then also there will be no weeds, and then soil erosion will be prevented. So because of that these machines have come. And also farm machinery में हम लोगों को एक बहुत, we had a MOU we have with the government of MP, where they are having custom hiring of agriculture, because all farmers cannot have the machine. They need not to have machine. Just like we take Ola and Uber cab for going from transportation, paying very little instead of having our own car. So instead of that, this machines are now, agriculture machines are available on custom hiring basis. इसका एक training, एक model हम लोगों का है. We have a collaborative project in which CIA gives training to those who take loan. Government, this our nationalized bank gives loan, MP government select the candidates, and then we help them how to set up a custom hiring center for agricultural machinery. On phone call you can get machine which will do operation in your field, like sowing, harvesting, threshing, and you pay for them for that use, and then you don't need to have tractor, driver, fuel, and repair and maintenance and EMI, etc. So this is a very successful program of government of MP, and MP is #1 in this all over in India, and many states are now following this model. For instead of every farmer purchasing a machine, custom hiring centers are set up and they provide service. In our institute, we also have for agro processing, agri-business incubation center, in which anybody can come and use these technologies developed by our institute. Like we have agricultural machinery design, because as you know, a lot of machine demand is coming. A lot of states are doing very good in agriculture
machinery manufacturing like Punjab was already doing, now Gujarat, Haryana and Maharashtra, but MP is not doing that good. So there is need for more machinery manufacturers because demand is increasing. Everybody want good quality machine. Quality is another issue. And so our institute, we have a prototype production center. We can give training to those who want to set up their agricultural machinery manufacturing unit using the modern CAD and CAM facility, so that machine design and selection of material for machine is provided. Custom wiring already, as I said, these are some processing units which are available for agribusiness incubation, like modern dal mill, livestock feed plant, because now we can make feed of all kinds, poultry feed, animal feed and aqua feed. So if there is a scope, livestock feed, then soybean is one of the main product of our institute. We can make because it has got 40% protein and good fat. So soya milk, soya paneer, soya flour, a lot of soybean based products are produced. That millet processing center, we need to millet lot of products can be made, fermented millet products, minimal now fruits and vegetable, everybody want neat and clean, hygienically packaged fruits and vegetable in our homes also. If you go in stores, you will find that kind of packages. For that, one bakery unit there, onion paste making machine, ripening chamber for fruits and vegetable, banana processing value chain, and also for energy generation, we have a biomass based briquette power generation unit, right? So these are some pictures you will see, cleaning and grading of food grains and also this fruits and vegetable, because farmer, if they do by hand, labor is expensive and that takes a lot of energy and time and drudgery. So these machines are made for like groundnut decorticator, this maize sheller, and these small farmers can afford also, and their need is done by, if there is no electricity, you can use pedal operated type decorticator. These are some milling machines, multi-purpose grain mill. You need to add value to your agro produce, convert wheat to wheat flour. From wheat flour, you make bakery products. So instead of, this is called value addition at every unit operation. So आप यदि गेहूं बेचेंगे तो उससे ज्यादा पैसा आपको क्लीन गेहूं बेचने में मिलेगा, फिर गेहूं का आटा बेचने में मिलेगा, फिर आटे को यदि आप बेकरी में डाल देंगे तो उसमें बिस्किट में ज्यादा आपको इनकम होगी. तो एवरी स्टेज में वैल्यू एडिशन करके आप अपने फार्मर अपनी इनकम बढ़ा सकता है. दीज आर स्मॉल मशीन, दे कैन पुट ऑन देयर ओन और कॉटेज लेवल पे दे कैन डू इट. ये एक हमारा सोयाबीन का मिल्क बनाने का प्लांट है. इसके भी हम लोग करीब 3000 एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन किया है, एंड दे हैव सेट अप अबाउट 250 यूनिट्स ऑल ओवर इंडिया चल रही हैं. दिस इज अबाउट 10,000 रुपीज वी चार्ज फॉर 1 वीक ट्रेनिंग. एंड मैनी पीपल, ये जैसे पोटैटो चिप्स मेकिंग की यूनिट है, लेडीज भी चला सकती है, पैडल ऑपरेटेड, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी. तो ये पोटैटो को छील के और ये बना के मशीन से, और ये केले को जल्दी पकाने का एक चैम्बर हम लोगों ने बनाया है जिससे, एंड इसमें हमने केमिकल को फ्री किया है. पहले जो कैल्शियम कार्बाइड बहुत ज्यादा यूज करते थे, उसकी जगह एथिलीन गैस को यूज करके, एक इसमें एसी लगा रहता है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करके राइपनिंग इज इनएक्टिवेटेड. ये करी लीफ स्ट्रिपर है, साउथ में बहुत ज्यादा करी लीफ हम लोग भी खाते हैं, मीठा नीम जिसको शायद बोलते हैं. तो उसके लिए भी एक मशीन बनाई, क्योंकि जब बहुत वॉल्यूम हो जाता है तो उसको फास्ट और एफिशिएंटली करने के लिए मशीनों की जरूरत है. ये एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्टर है, जिससे कि आप एलोवेरा का जेल निकाल के मेडिसिन में यूज कर सकते हैं. ये जैसे पैडल ऑपरेटेड बट चिपिंग मशीन, ये जो शुगर केन, पहले हम लोग पूरा शुगर केन वेस्ट करते थे सोइंग के लिए, अभी ओनली बट गोज इन दैट. रिमेनिंग शुगर केन यू कैन यूज फॉर जूस एंड अदर फूड यूजेस, तो ओनली बड इज यूज. ये कुछ वेजिटेबल ड्रायर्स हैं जिससे आप डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट बेच सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के, जिससे उनको वैल्यू ज्यादा होती है और ज्यादा एक्सेस प्रोडक्शन हो जाए तो आप डिहाइड्रेटेड, जैसे कॉलीफ्लावर है या कैबेज है या पीज है, इनको आप सुखा के बेच सकते हैं. एक हमारा बहुत अच्छा पैकेज जो शुगर केन का कंप्लीट पैकेज है, शुगर केन के बड चिपिंग से लेके और उसकी पूरी, उसका ये हमारे साउथ सेंटर ने. और अभी जो आप कह रहे हैं इन्वायरमेंट की बात हो रही, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, उसमें आपको यदि बहुत, ये जो बर्निंग ऑफ स्ट्रॉ है उसको मैनेज करने की टेक्नोलॉजी बनी है, जिसमें हमको क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, सॉइल को मिनिमम डिस्टर्ब करना चाहिए और स्टबल को फील्ड में मिला देना चाहिए. ये हमें इंडिया की ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी. इसको हम फॉलो करेंगे तो क्रॉप बर्निंग की इशू नहीं आएगा, सॉइल की हेल्थ अच्छी रहेगी. और ये जो बायोलॉजिकल मटेरियल उसमें ये एक उसका है, तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं. जो एनवायरमेंट भी एक पॉइंट था इसमें. तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से मिनिमम टिलेज, इससे एनहेंस प्रोडक्टिविटी और क्रॉप रेसिड्यू का कवर को उसी में मिला दीजिए. अभी किसान इसलिए जला देता है कि उसको सॉइल में मिलाने के लिए जो मशीन लगती है वो बहुत महंगी पड़ती है, और
इसको जलाने के लिए एक माचिस की तीली से होता है। सो अभी गवर्नमेंट ने 80% तक सब्सिडी दी है फॉर दोज मशीन्स विच कैन बी यूज्ड, और उसको इकट्ठा करके गवर्नमेंट उनके बोर्ड बना रही है। जो स्ट्रॉ हम लोग जलाते थे उसके बदले उसका बोर्ड, अभी उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है लेकिन एटलीस्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो रहा है। तो ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिससे हमारी सॉइल बचेगी, एनवायरमेंट बचेगा, और ये मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, रिड्यूस सॉइल कंपैक्शन, अननेसेसरी उसमें बार बार ट्रैक्टर चलाने से सॉइल के पोर्स कम हो जाते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। तो इसी तरह से मिनिमम वाटर यूटिलाइजेशन और वो मॉइस्चर है ना, ऑप्टिमाइज एनर्जी यूज, क्योंकि जितनी बार ट्रैक्टर आप चलाएंगे उतनी एनर्जी उसकी लगेगी, उतना फ्यूल लगेगा, उतनी कार्बन एयर में भी जाएगा। तो ये सबको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। ये मिनिमम और जीरो टिलेज, ये बहुत सी टेक्नोलॉजीज अब आ गई हैं। एवरीबडी हैज रियलाइज्ड कि ये इसका कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा मशीन और पेस्टिसाइड यूज करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती बट सस्टेनेबल नहीं हो पा रही और महंगी होती जा रही। तो ये सब बहुत सी टेक्नोलॉजी हैं, इनके सब रिसर्च डाटा भी है, जैसे बर्निंग ऑफ क्रैश रेसिड्यू से कौन कौन सी गैसें एनवायरनमेंट में जाती हैं और कितना ये बढ़ गया है। मिथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन की जो जितनी ये गैसेज हैं। हेलो, Actually, we have another meeting, online meeting from 2 onwards. ओके, सो चलिए मैं खत्म करता हूँ। ये मशीनों का पैकेज है, एनर्जी फ्रॉम क्रॉप रेसिड्यू, बायोडीजल से, गैसिफिकेशन से, बायोमिथेन से, बायोचार से। तो ये ऑल्सो सोलर, ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हमने बनाए हुए हैं, ये सोलर से चलते हैं, जहां अपनी क्रॉप को आप 1 हफ्ते तक सेफली रख सकते हैं, जो अदरवाइज बहुत सेल करना पड़ता है। ये हम लोगों ने एक प्लांट लगाया है जिसमें बायोमास से एनर्जी बनती है, रायसेन के पास है ये। तो इससे भी आप बिजली बना सकते हैं जहां बिजली नहीं है, क्रॉप रेसिड्यू जला के। ये छोटे यूनिट है जो रूरल एरिया में अडॉप्ट हो सकती है। गांव पे अपने लेडीज पहले जो कोयला बनाती थी, नलीदार कोयला, उसको, और ये स्मोकलेस इसमें वो बनती है फ्लेम, तो उनको जो कार्बन लेडीज को जाता था किचन में, वो अभी इसमें नहीं जाता है। ये बहुत से सोलर ड्रायर्स हैं, क्योंकि अभी एनर्जी और सोलर एनर्जी का। तो ये मेरे कंक्लूजन हैं कि बेसिकली हमको एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए टेक्नोलॉजीज का यूज करके, प्रिसीजन एग्रीकल्चर को फॉलो करके, फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी, इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, इंडिया ऑलरेडी आत्मनिर्भर है। तो ये है, यही मैं कहना चाहता था। और इफ समबडी हैज क्वेश्चन, मेरा ईमेल यहाँ दिया है, मोबाइल भी शेयर कर सकते हैं डॉक्टर चौबे। तो आपको कभी क्वेश्चन हो या सीआई में विजिट करनी हो या कोई ट्रेनिंग करनी हो या बिजनेस यूनिट, तो आप वहाँ के डायरेक्टर को अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। डेफिनेटली आपका जो लेक्चर है बहुत अच्छा रहा, और जो हमारे पार्टिसिपेंट, जो लोग हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में अगर किसी भी तरह का इनोवेटिव आपकी फर्दर जो टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, वो सर से मिल लें। व्यक्तिगत तौर पे मुझे भी मैं चाहूंगा कि मैं एक बार मिलूं सर आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बायोलॉजी फील्ड से हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एग्रीकल्चर फील्ड में इतनी नई टेक्निक्स। मैं एक चीज जो मैं बता नहीं पाया, हमारे यहाँ भी टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और आईपीआर सेल है। हम लोग ने 35 पेटेंट अप्लाई किए हैं, 3-4 तो मिले हैं, और ऑल्सो वो अच्छा यूनिट है। कभी मैं आपके यहाँ भी आके लेक्चर दे सकता हूँ फैकल्टी को, मैं बात करके, क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ थोड़ा सा। मैं सोचता हूँ कि हम कुछ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, सीआईए और इनका एक एमओयू होना चाहिए। Most welcome. Thank you, sir. Thank you. So Thank you. now we have another lecture by Dr. Rakesh Kumar Arya, sir. Uh, Dr. Rakesh Kumar Arya, sir, is the Chief Scientist in MP Council of Science and Technology, and he is heading the Science and Popularization Division. Sir, having more than 25 years of experience in the field of science and technology. Basically, he is an engineer. And sir having the research experience in the field of non-linear and fuzzy-controlled theory, optimization of techniques, GIS and image processing, machine learning and deep learning, application of artificial intelligence for control, communication, image processing, and biomedical signaling. Sir, we would like to request you kindly deliver your valuable lecture, please. Thank you, Dr. साहब। जब इस वेबिनार की प्लानिंग चल रही थी, आई वाज रिक्वेस्टेड टू आवर डायरेक्टर जनरल सर कि हम बाहर से स्पीकर्स बुला रहे हैं, कुछ मेरे भी थॉट्स हैं, क्यों ना मैं भी अपने थॉट्स इस वेबिनार में शेयर करूं। तो आई वुड लाइक टू थैंक आवर डीजी सर, आज के चीफ गेस्ट जो मेरे भी मेंटर हैं, मेरे गुरुजी भी हैं और मेरे एक कॉलीग भी रहे हैं। सागर में गुरुजी सर ने मुझे पढ़ाया है,
रीवा में हम लोग कोलीग्स थे, अभी सर बीसी हैं। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। मैं अपने टॉक को सिर्फ 10 या 12 मिनट में खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है मेरे टॉक में जो पहली बार आ रही है। सारे टर्म्स जो हैं वो सब, चाहे हमारे डिलीशन हो, चाहे किसी ने टर्म्स को यूज किया है, तो वही सारे टर्म्स को थोड़ा एक एक बारे में डेफिनेशन बोलूं या बेसिक उसका प्रिंसिपल क्या है, यही टॉपिक्स हैं। सेकेंडली ये है कि जो ओवरऑल मेरा प्रेजेंटेशन है उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पिछले 25 साल में आईसीटी टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच गई है, आज का रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, आज कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज बिल्कुल बर्निंग टॉपिक है, और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है, क्योंकि फ्यूचर तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। लोग 25 साल की आजादी के अमृत महोत्सव में ये भी बात कर रहे हैं कि अगले 25 साल में हम कहाँ खड़े होंगे। सबको मालूम है आईसीटी में इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। प्लीज नेक्स्ट, जरा फास्ट चलते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग आज सुनते ही होंगे, चाहे हम अगर डिजिटल की बात करें तो एनालॉग या डिजिटल सिग्नल सब लोग यूज करते हैं। जॉर्ज बुली जिसने बुलियन अलजेब्रा दिया, क्योंकि पूरी डिजिटल टेक्नोलॉजी बुलियन अलजेब्रा पे चलती है। एक बहुत ही कॉमन टाइमर है, चिप है 555 टाइमर। हम रोजाना अपने घरों में ये 555 टाइमर का वो देखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं लगी रहती है। रिलेस नहीं, पिछले रिलेस का क्या रोल है, या सेंसर्स की पूरी दुनिया क्या है, बिना सेंसर्स के कोई भी डिवाइस बन नहीं सकता है। डिस्प्ले मेथड कौन कौन से टाइप के होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर जो 90 से चल रहे हैं, आज भी माइक्रो कंट्रोलर का उतना ही यूज है जितना 90s में था। कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट सबको मालूम है कि जब मैं तो व्यक्तिगत तौर पे 90s में जब मैंने एडमिशन लिया था, जब से यूज कर रहा हूँ, उस समय P1 हुआ करता था। P1 से लेकर के P4 पेंटियम 4 हुआ, उसके बाद फिर पेंटियम 4 के बाद नाम चेंज नहीं हुआ, उसी में मल्टीप्लिकेशन होता गया, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, उसी में प्रोसेस ऐड होते गए। रिसेंट आज अगर हम बच्चों से पूछें, स्कूल के बच्चों से कि आर्डिनो किट क्या है, रास्पबेरी पाई क्या है, तो सबको मालूम होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि स्कूल के बच्चे हमसे ज्यादा जानते हैं। और आर्डिनो जो बोर्ड होता है वो 300 रुपीज के आसपास आता है, और रास्पबेरी पाई 2-3,000 के आसपास आता है। और ये दो बोर्ड ने इतना रिवोल्यूशन ला दिया है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी में, कि आज हर चीज ऑटोमेशन हो गई है। और इन्हीं दो बोर्ड के कारण एक नई टर्म पिछले 3-4 सालों से चल रही है, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस हम सब लोग यूज करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आईपी एड्रेस जब एग्जॉस्ट हो रहा था तो उस पर आईपी वर्जन चेंज हुआ। एक्सपर्ट सिस्टम, पीएलसी, प्रोग्रामर लॉजिक कंट्रोलर, इंडस्ट्री में बहुत सारा काम होता है। स्काडा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जो हम ये एक सिंपल से एग्जांपल बोलूं तो जो हमारा एमपीवी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसने रिसेंटली 3 साल पहले से स्काडा यूज किया है। और जब से उसने स्काडा यूज किया है, हमें अगर हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है स्काडा सिस्टम में, तो कब पावर सप्लाई जाएगी उसका मैसेज आता है हमारे पास, या कितने दिन के लिए फीडर बंद किया है उसका भी मैसेज आता है। तो स्काडा की एडवांटेज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कॉमन टर्म है, सबने यूज करी है। उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के तरीके जो होते हैं, चाहे वो फजी लॉजिक यूज करें, चाहे वो न्यूरल नेटवर्क यूज करें, और इससे एडवांस वर्जन जो आज यूज हो रही है, दैट इज मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग। इंडस्ट्री 4.0 की साहू जी ने भी चर्चा करी, हमारे बीसी सर ने भी चर्चा करी, डी साहब ने चर्चा करी। इंडस्ट्री 4.0 एक ऐसा सिस्टम है या ऐसा फ्यूचर है जिसमें अगले 10 या 20 साल बाद अब जो इंडस्ट्रीज लगेंगी वो पूरा साइबर फिजिकल बेस्ड सिस्टम होगी। रोबोटिक्स सबको मालूम है, रोबोटिक्स सब लोग यूज करते हैं। रोबोटिक्स में 2-3 टर्म होती हैं, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है या एनालॉजी है। अब मैं रिसेंट टेक्नोलॉजी जिस बात में जो सबसे ज्यादा चल रही है आज की डेट में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चल रही है। जीन इंजीनियरिंग में बहुत लोग चर्चा कर चुके हैं। वर्चुअल रियलिटी बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत लोग इसमें काम कर रहे हैं। वर्चुअल का भी एक फ्यूचर है। एक्सआर टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट प्लीज, बहुत फास्ट चलती है। फास्ट चलो, सबको मालूम है एनालॉग डिजिटल सिग्नल, और एनालॉग डिजिटल सिग्नल ऑपरेट करने के लिए सब लोग बुलियन अलजेब्रा सबको हम लोग 11th-12th में पढ़े हुए हैं। ये एक छोटी सी चिप है, अगर कोई स्टूडेंट हो उसको इसको इंप्लीमेंट करना चाहे तो हमारे जितने भी डिजिटल क्या खिलौने बोले या डिजिटल घर में होते हैं, उसमें जो लाइट्स ऑन ऑफ होती है सीरीज, वो सिर्फ एक 40 रुपए की जो ये आती है चिप आती है 555 टाइमर,
और 2 रेजिस्टेंस और कंडेंसर से 555 टाइमर बन जाता है। उससे हम बच्चे स्कूल के बच्चे खिलौना बना लेते हैं, अपनी एलईडीज को ऑन ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। रिलेज का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो छोटा रिले हो, चाहे वो बहुत बड़ा रिले हो, चाहे वो मतलब ऑन ऑफ करने के लिए आजकल तो रिमोट मतलब जो इस एमसीएफ हमारा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इसरो का जो भोपाल में है, एमसीएफ भोपाल से डायरेक्ट वो रिले के थ्रू ऑपरेट करते हैं हासन के सिस्टम, क्योंकि मेरा नेबर है इसलिए वो सब चर्चा होती रहती है। तो रिलेज का अपना बहुत बड़ा रोल है, अलग अलग साइज के अलग अलग रिलेज आते हैं। ऐसी डिस्प्ले सिस्टम सब में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सब में एक डिस्प्ले सिस्टम होता है। नेक्स्ट प्लीज। ऐसे ही सेंसर का आज की दुनिया में सेंसर का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ मुझे मेरे नॉलेज में सिर्फ एक ही फिजिकल क्वांटिटी है जिसका अभी तक सेंसर नहीं बना है, अदरवाइज सारे फिजिकल क्वांटिटी का सेंसर बन चुके हैं। और जो इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा किस फिजिकल क्वांटिटी का सेंसर नहीं बना है, वो ये है कि अभी तक टेस्ट के लिए हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उन सबके लिए सेंसर बन चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रोबोट नहीं है जो टेस्ट बता सके कि इस उसको कुछ टेस्ट करा सके, वो बता सके कि मीठा है या खट्टा है या कड़वा है। या तो टेस्ट के लिए अभी कोई मेरी नॉलेज में सेंसर नहीं बना है। बाकी हर चीज के लिए सेंसर बन चुके हैं। सेंसर होता क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो फिजिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में कन्वर्ट कर दे, चाहे वो थर्मोमीटर हो, फोटोडायोड हो, ऐसे हजारों टाइप के सेंसर्स हैं। और हमारे हम कहें कि आसपास हमारे सेंसर से घिरे हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा सेंसर तो हमारे स्मार्टफोन में लगा हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अगली बात अगला स्टेप की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर हो या माइक्रो प्रोसेसर 85, 8085 हो, 8086 हो, यही बेसिकली ये शुरुआत होती है कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी में। जो छोटा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो केवल उसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, और जो उसमें बहुत कम मेमोरी होती है। एक छोटा सा पिक्टोरियल व्यू है माइक्रो प्रोसेसर का। नेक्स्ट प्लीज। माइक्रो कंट्रोलर 8051 तो नंबर है। माइक्रो कंट्रोलर 1985 90s की ड्यूरेशन में इसका इन्वेंशन हुआ था, लेकिन आज भी वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रो कंट्रोलर आज भी, चाहे वो जहां भी हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ छोटे मोटे कंट्रोल सिस्टम की हो, वहां पर माइक्रो कंट्रोलर का बहुत रिक्वायरमेंट है। माइक्रो कंट्रोलर आज भी उतना ही यूज होता है, क्योंकि छोटे मतलब स्मॉल कंप्यूटेशन जहां रिक्वायरमेंट हो, उस माइक्रो कंट्रोलर के बहुत सारे एडवांटेज हैं। उसमें बहुत सारे टाइमर्स लगे होते हैं, उससे छोटे मोटे कंट्रोल और ऑटोमेशन कर सकते हैं। नहीं पढ़ रहे हैं। एक अगली टर्म जो हमारे आसपास बहुत हमने सुना होगा कि एम्बेडेड सिस्टम है। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? एक्चुअली जब हमें मालूम हो कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हमें कंट्रोल या प्रोसेस का एक छोटा सा एग्जांपल बोले कि जो अपना एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर में एक फिक्स टास्क है, अब उसके लिए हमने पीसीबी डिजाइन कर दी, उसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा दिया, उसमें सब कुछ लगा दिया। उस पर्टिकुलर टास्क के लिए ऑपरेशन के लिए जो चिप होगी या जो सिस्टम होगा उसको हम एम्बेडेड सिस्टम्स कहते हैं। हम लोग एम्बेडेड सिस्टम से भी आसपास घिरे हुए हैं। पीएलसी और स्काडा में बता चुका हूँ, ये इंडस्ट्री में यूज होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब थोड़ा सा क्योंकि आईसीटी से बात कर रहे हैं तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें। कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे कैसे ग्रो हुआ, तो आज से हम 25-30 साल पहले जब हम लोग कॉलेज लाइफ में थे, उस समय सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन हुआ करता था रेडियो फ्रिक्वेंसी का। रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज हुआ करती थी। रेडियो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ट्रांसमिशन होता था। हम लोग शॉर्ट वेव या मीडियम वेव ट्यून करके अलग अलग स्टेशन लगाते थे। इसके बाद फिर अगला रिवोल्यूशन आया जब माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव वेव्स के थ्रू ट्रांसमिशन हुआ। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन ने पूरी दुनिया बदल दी। आज हम चाहे वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, चाहे वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो, चाहे वो पोलर सैटेलाइट हो, चाहे वो मार्स मिशन हो, चाहे वो मून मिशन हो, अगर आउट ऑफ मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं कहे, चाहे वो जिसकी कोई रेंज नहीं कहे, जिसकी कोई लिमिट नहीं कहे, वो अगर वहां तक कम्युनिकेशन कोई कर सकता है, दैट इज नोन एज माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। इसने बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेके आया है। इसके बाद कम्युनिकेशन में एक थर्ड रिवोल्यूशन जो आया है स्पीड के मामले में। डिस्टेंस के मामले में माइक्रोवेव ट्रांसमिशन था, आप कितनी भी डिस्टेंस में जा सकते हैं। और अगर स्पीड की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, सबसे ज्यादा डेटा ट्रांसफर की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर, डेटा लॉस या ऑप्टिकल फाइबर में सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। अगर किसी ऑफिस में किसी को ऑप्टिकल फाइबर, हम सब लोगों देखे होंगे, अगर किसी नहीं देखा होगा तो जो ऑफिस में जो हमारा सीआईए डिवीजन है, वहां पर जो बीएसएनएल से जो लाइन आई है, मेन लाइन, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। क्योंकि इसका प्रिंसिपल ये है कि ऑप्टिकल मतलब कांच का बना होता है, कांच का पूरा फाइबर बना होता है, और उसमें 2 लेयर होती है, सेंटर लेयर और आउटर लेयर। और
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पे डेटा ट्रांसफर होता है, इसलिए कोई लॉस भी नहीं होता और सबसे फास्ट डेटा ट्रांसमिशन होता है। स्मॉल डिस्टेंस कम्युनिकेशन की बात करें तो जो हम सब लोग यूज करते हैं, एक तो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है ब्लूटूथ। आज हम कितने भी डिवाइस कनेक्ट कर लें, ब्लूटूथ स्मॉल डिस्टेंस कम्युनिकेशन 10 मीटर 20 मीटर। इसके बाद फिर अगला स्टेप है वाईफाई भी सब लोग यूज करते हैं। अच्छा, मेरे वेबिनार में एक चीज और बता दूं, शायद सबको वाईफाई का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, तो प्लीज, फाई मींस फिडेलिटी और वाई मींस वायरलेस। तो वाईफाई मतलब है कि वायरलेस फिडेलिटी। एक उसका एडवांस वर्जन आ रहा है जो हो सकता है कि अगले 1-2 साल में हम उसका एप्लीकेशन यूज करें, दैट इज लाइफाई। जब लाइफाई आ जाएगा तो ऐसा क्लेम R&D ऐसा क्लेम कर रही है कि जो हमारा डेटा ट्रांसमिशन का रेट है वो जीबीस में होगा, जीबीस पर सेकंड। दैट मींस एक मूवी को डाउनलोड करने में हमें लाइफाई के थ्रू हार्डली मे बी मिनट्स का काम होगा। अब कंप्यूटर कम्युनिकेशन की बात आएगी तो पहले लैन सबको मालूम है, वैन सबको मालूम है, पूरे स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क सबको मालूम है। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ज्यादा पॉपुलर था, आज डेट में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर है और उसमें मॉड्यूलेशन मैथमेटिक्स टेक्निक है, अलग-अलग टेक्निक्स है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये ऊपर तो दिख नहीं रहा है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये मालूम है पिछले 25 सालों में हमने बहुत सारे कंप्यूटर्स को जब लैन में या वैन में कनेक्ट किया तो हर एक कंप्यूटर्स का एक एड्रेस होता है, वो कहलाता है आईपी एड्रेस। तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आज से 5 साल पहले की बात करें तो केवल ज्यादातर कंप्यूटर्स ही इंटरनेट में कनेक्ट होते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो वैसे बहुत सारे जो कंप्यूटर्स के अलावा बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट होने लगे। तो उससे हुआ क्या है कि जो इंटरनेट, हर एक मशीन का एक एड्रेस होता है, इंटरनेट एड्रेस एग्जॉस्ट हो गया। मतलब आज से 3 साल पहले हम आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में चल रहे थे, जिसकी कैपेसिटी पूरी दुनिया के लिए केवल 4 बिलियन एड्रेस प्रोवाइड करना था, और हमारा 4 बिलियन एड्रेस ऑलरेडी हो चुका है, बैकअप हो चुका है। इसलिए एक नई टेक्नोलॉजी में जाना पड़ा जो आईपी वर्जन 6 है। आईपी वर्जन 6 में क्योंकि हम सब लोग कंप्यूटर में आईपी चेंज करते हैं, तो आने वाले समय में हम सबको जो कॉन्फ़िगर करते हैं वो आईपी वर्जन 4 की जगह आईपी वर्जन 6 में जाएंगे। और आईपी वर्जन 6 जो है वो कितने एड्रेस प्रोवाइड करता है? 3 × 4 × 10⁻38 एड्रेस। मतलब अगले 5 साल 10 साल तक एक्सपेक्टेड है कि चाहे आप कितने भी डिवाइस कनेक्ट कर लीजिए नेट से, आईपी एड्रेस एग्जॉस्ट नहीं होंगे। तो एक ये रिसेंट चेंज हुआ है, आईपी वर्जन 4 से आईपी वर्जन 6 में शिफ्ट हुए हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। जैसे मैंने बोला कि अभी जैसे ही पिछले 5 सालों में जैसे जैसे R&D हुई है, तो सिर्फ कंप्यूटर नहीं, आज हम घर में बैठे हैं और आज हम ऑफिस में बैठे हैं और हमारे घर में हमने वाईफाई के थ्रू वेबकैम लगा के रखे हैं। हम अपने ऑफिस से फुल टाइम स्मार्टफोन से अपना फुल टाइम अपने घर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दैट इज ड्यू टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आखिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या? एक अगर फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो कनेक्ट है इंटरनेट से, जितने फिजिकल ऑब्जेक्ट है कंप्यूटर के अलावा ही बहुत सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट, वो सब जब कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से, उस नेटवर्क को कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वो एक सिंपल सा एक फिटनेस ट्रैकर हो सकता है, एक थर्मोस्टेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे एक सिंपल सी बात करूं, मेरे घर में क्या नाम है, अगर ठंड का मौसम है और मेरे घर में गीजर लगा है, अब मैं घर जाऊंगा, गीजर ऑन करूंगा, तब 20 मिनट बाद पानी गर्म होगा, तब मैं नहाऊंगा। अगर आईओटी बेस्ड मेरा सिस्टम है तो मैं 20 मिनट पहले यहीं से अपने मोबाइल से स्विच ऑन कर दूंगा गीजर, मेरा गीजर स्विच ऑन हो जाएगा। और तो इसका जो कल्पना है ये बोले कि इसकी जो सोच है कि एक रेफ्रिजरेटर अगर आईओटी से कनेक्टेड है और उसमें एम्बेडेड सिस्टम लगा है, तो उससे जो भी सामान उस रेफ्रिजरेटर से निकाला जाएगा वो ऑटोमेटिकली, उसका एडवांस ऑटोमेटिकली वो रेफ्रिजरेटर वो ऑनलाइन मार्केट से परचेज भी कर देगा, बिलिंग भी कर देगा। मतलब इतना एडवांस सोच है आईओटी की कि एक रेफ्रिजरेटर, आपको कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ आईओटी रेफ्रिजरेटर हो या जितने भी डिवाइस ऑटोमेटिकली सब अपना इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कंसेप्ट से चलेंगे। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आज पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है आज। अच्छा, इसको पॉपुलर करने के पीछे जो रीजन है मैं आगे बताता हूँ। नेक्स्ट प्लीज।
हाँ, इसको सबसे ज्यादा पॉपुलर करने के पीछे एक रीजन है, एक 300 रुपीज की एक बोर्ड आया है दैट इज नोन एज ऑर्डिनो। आज स्कूल के बच्चे जो अच्छे अच्छे स्कूलों के बच्चे हैं वो ऑर्डिनो बोर्ड को यूज करके अपने घर के छोटे मोटे ऑटोमेशन कर सकते हैं। और ऑर्डिनो बोर्ड से IoT नेक्स्ट उसको दिखाने बस। एक छोटा सा बोर्ड है, अगर आप देखें तो ऑर्डिनो बोर्ड है, ऊपर है। इस बोर्ड में एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है और एक पैच कॉर्ड है जिसमें हम अपने जो कंप्यूटर की कॉर्ड है वो वाली इंटरनेट वाली पे कॉर्ड लगाते हैं। अब इस माइक्रो कंट्रोलर में हम छोटे से कोड लिख करके एक बार फीड कर दिया कि आपको ऑन ऑफ करना है या अलग अलग पोर्ट है, उस हिसाब से पोर्ट लिख दिया तो, और उसमें फिर उस सिस्टम से कनेक्ट कर दिया तो परमानेंटली वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हो गया। इसी ऑर्डिनो बोर्ड को यूज करके जो स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बिगिनर्स हैं वो रोबोट बना रहे हैं। इसमें अपने आप में सफिशिएंट 32 पोर्ट्स हैं, मतलब 32 हम पेरिफेरल डिवाइसेस यूज करके। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को ये बोलूं कि इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी के पीछे रीजन यही है कि बहुत लो कॉस्ट बोर्ड आ गए हैं और बहुत लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। एक दूसरा बोर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है आजकल, रास्पबेरी पाई। ये रास्पबेरी पाई अराउंड 3000 रुपीज में आता है, कॉस्टिंग है, और ये अपने आप में पूरा कंप्यूटर है। मतलब इसमें मदरबोर्ड भी है, इसमें एवरीथिंग एक्सेप्ट आपका माउस स्क्रीन और कीबोर्ड। आपके पास अगर एक्सटर्नल माउस स्क्रीन मॉनिटर और कीबोर्ड है, इवन मॉनिटर तो आपका ये स्मार्टफोन भी चल जाता है, सिर्फ कीबोर्ड और माउस होना चाहिए। ये अपने आप में ये बोर्ड है पूरा, इसमें चाहे आप लाइनेक्स चलाए, इसमें चाहे विंडोज चलाए, 3000 रुपीज में आपका पूरा पर्पस सॉल्व कर रहा है। तो ये भी एक बहुत पॉपुलर हुआ है ऑटोमेशन के लिए, रास्पबेरी पाई। नेक्स्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट है। रोबोटिक्स की बात करें तो आजकल बहुत ज्यादा बात हो रही है कि रोबोटिक्स है क्या। एक रोबोट कॉम्बिनेशन है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का। उसकी एनालॉजी कहीं ना कहीं से ली जाती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन का पार्ट हो या बर्ड हो या इंसेक्ट हो या रेप्टाइल हो या एनिमल, मतलब रोबोट बनाने के पीछे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मोटिव होता है कि अगर मेरा रोबोट बिल पे जाना चाहिए तो मैं रैट की एनालॉजी लूंगा, मेरा रोबोट पेड़ में चढ़ना चाहिए तो मैं इंसेक्ट की एनालॉजी लूंगा, मेरा रोबोट उड़ना चाहिए तो मैं बर्ड्स की एनालॉजी लूंगा। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जस्ट मिनट, अभी जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है या रिसेंट रिसर्च चल रही है या फ्यूचर की बात करें तो आजकल लिविंग रोबोट्स के बारे में बातचीत चल रही है। कल या परसों एक आर्टिकल आया था या एक महीने पहले एक आर्टिकल आया था कि एक माइक्रो रोबोट जो बायोलॉजिकल है, और अभी कल एक न्यूज आई थी कि ऐसे लिविंग रोबोट्स की परिकल्पना या R&D चल रही है जो ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किए जाएंगे, और वो इतने माइक्रो हैं कि वो जा करके जो कैंसर सेल है उसको वहां से कैंसर सेल्स को वहां से ऑपरेट कर सकते हैं। इस लेवल तक की R&D चल रही है लिविंग रोबोट्स के साथ। नेक्स्ट कुछ एनालॉजी है, फॉर एग्जांपल ये डॉग से ली गई एनालॉजी, ऊपर वाली इंसेक्ट से ली गई है, ये क्रैब से ली गई है, डॉग से ली गई है, और ऐसे JCB या ह्यूमन। नेक्स्ट प्लीज। एडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रोबोट, छोड़िए स्किप करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बिग टॉपिक है। टूल्स टू क्रिएटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत, क्योंकि इसमें PhD हो सकती है, इसलिए 5 मिनट बताना बड़ा मुश्किल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड करने के लिए हम फजी लॉजिक का यूज कर सकते हैं, हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज कर सकते हैं, हम कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का यूज कर सकते हैं, और आजकल सबसे ज्यादा जो यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स या रिसर्चर दैट इज मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। चाहिए क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड करने के लिए रोबोट में? बहुत सारा डेटा चाहिए और सेट ऑफ रूल्स चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। एंड आगे पढ़ो, टाइम नहीं है। ओके, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, ये कंसेप्ट आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। हम लोग रोजाना इससे 2-4 होते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। एक सिंपल सी बात करूं कि 3-4 एग्जांपल बताऊंगा कि हमारे स्मार्टफोन में एक फीचर होता है गूगल लेंस। अगर आप गूगल लेंस देखेंगे, आप छोटा सा एग्जांपल देखिए, बाहर जाइए, कोई पत्ती या कोई फूल की फोटो खींचिए और उसको गूगल लेंस से स्कैन कराइए। गूगल लेंस के थ्रू अगर आप फोटो खींचेंगे तो वो 5 मिनट में बता देगा कि ये इसका बोटेनिकल नाम क्या है। ये हम लोग बाहर एक्सपेरिमेंट थोड़े दिन पहले कर चुके हैं। एक कोई फूल था बाहर, मैं और आलोक चौधरी जी,
वो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो कौन सा। हम 3 लोग बोले थे ये है, ये है, ये। हमने बोला नहीं, गूगल लेंस से, गूगल लेंस से फोटो लिया, गूगल लेंस ने 2 मिनट में बता दिया कि ये कौन सा फ्लावर है। ऐसे ही मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो गूगल असिस्टेंट सबसे बड़ा एग्जांपल है। आज से 10 साल पहले अगर हम सोचे तो अगर जो वॉइस टू टेक्स्ट वाले जो सॉफ्टवेयर हुए थे उसमें हर एक को लर्न करना पड़ता था, हर एक को ट्रेन करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल अगर मैंने वॉइस टू टेक्स्ट वाला सॉफ्टवेयर यूज किया तो मुझे अपने आप को ट्रेन कराना पड़ता था। लेकिन गूगल असिस्टेंट ने इतने अलग अलग तरीके से या इतने डाटा सैंपल डाटा दे के रखे हैं कि आज 80% केस में अगर कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होके ना बोले तो गूगल बोलने वाले की भाषा समझ जाता है कि क्या बोल रहा है और उसके जवाब में तुरंत रिप्लाई करता है कि आपका ये है। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी, ये इसके पीछे टेक्नोलॉजी है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की। मशीन लर्निंग पहले आई, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का और भी क्या नाम फिल्टर रूप है डीप लर्निंग, आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है। अभी तक डीप लर्निंग में वर्ल्ड वाइड 22,000 प्रोडक्ट को डीप लर्निंग के थ्रू ट्रेन करा चुके हैं। चाहे आप छोटे मोटे डीप लर्निंग, अगर आप नेट पे देखें तो छोटे मोटे, अगर आप ये बॉटल की फोटो खींचेंगे तो वो अपने आप में बता देगा कि दिस इज ए वाटर बॉटल। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो डीप लर्निंग के थ्रू। अच्छा, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का एक सबसे बड़ा रिसेंट एग्जांपल बताऊं, चाइना में जो यूज हुआ न्यूज के थ्रू, कि हम लोग क्या है कि जब कोविड था तो जितने भी एक्सरेज हैं उनको मैनुअली हमारे डॉक्टर्स चेक करते थे कि कोविड है कि नहीं। चाइना ने इस टेक्नोलॉजी को यूज किया और उनका इस टेक्नोलॉजी बता दी थी कि वेदर दिस इन्फेक्शन बिलोंग्स टू कोविड और नॉन कोविड। तो इस टेक्नोलॉजी के बहुत ही वास्ट एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट प्लीज। एक रिसेंट टेक्नोलॉजी चल रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है ब्लॉकचेन। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इसके एप्लीकेशन का, या ये बोले कि ओरिजिन वहीं से हुआ है, बिटकॉइन। आज तक कभी किसी ने सुना कि बिटकॉइन में जरा सी भी हेराफेरी है, और 100% लोग बिटकॉइन में क्यों वो कर रहे हैं, क्या नाम है, बिलीव कर रहे हैं, जबकि ये पूरा बिटकॉइन का सिस्टम ही पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। उसके पीछे टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फंडा क्या है कि जितने भी ब्लॉक्स हैं एक लेजर टाइप के तो होते हैं, उसमें जितना भी इंफॉर्मेशन है, हर एक ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन है, अब चाहे वो फाइनेंशियल डिटेल्स हो चाहे जो भी हो, और वो सब आपस में एक दूसरे से चेन के थ्रू बने हैं। अब जो भी इंफॉर्मेशन चेंज होगी, चाहे वो फ्रैक्शंस का अमाउंट हो चेंज हो या कुछ भी हो, वो जितने भी ब्लॉक्स हैं सब जगह चेंज रिफ्लेक्ट होंगे। दैट मीन्स इसमें सिक्योरिटी इशू इतना हाई है कि चेंज मतलब कहीं से कोई चेंज होने की गुंजाइश नहीं। जितने ब्लॉक्स अगर 1 बिलियन ब्लॉक्स बन गए हैं तो 1 बिलियन ब्लॉक्स में पूरा ट्रांजेक्शन होगा, तो आप चेंज कर नहीं सकते। तो इसलिए ब्लॉकचेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिसेंट टेक्नोलॉजी, आजकल ब्लॉकचेन का एप्लीकेशन दूसरे भी बिजनेस में हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। वर्चुअल रियलिटी भी आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है। आपको एक कैमरा, आपकी आईज में एक कैमरा पहना दिया जाता है, और एक चाहे सामने मूवी के थ्रू, मतलब इसका एक मैं लाइव एग्जांपल बताऊं, मैंने खुद भी देखा है। जो क्या कहते हैं, साइंस सिटी कोलकाता में एक जो वर्चुअल रियलिटी का बस है, एक बस व्हीकल नुमा एक चीज है, उसमें आपको बैठा दिया जाएगा और सामने मूवी चलाएगी और आपको वर्चुअल रियलिटी का एक एस्पेक्ट दे दिया जाएगा। अब इसका एडवांस वर्जन ये है कि जैसे ही जब वो ब्रिज आता है, तो ब्रिज में जैसे ही जो पाथ है वो ऊपर नीचे होता है, तो उस टाइम जिस चेयर में हम बैठे हैं वो चेयर भी उसी हिसाब से रोटेट होती है। तो हमें लगता है कि हम खुद उस आग में जा रहे हैं या उस खाई में जा रहे हैं। और तो और ऐसा भी मैकेनिज्म है कई जगह कि जब इमेज में बारिश हो रही है तो आपके आसपास भी कुछ फाउंटेन्स लगा के रखे हैं, थोड़ा सा फाउंटेन्स करेंगे तो वर्चुअल रियलिटी वाकई में आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कुछ भी, वर्चुअल रियलिटी सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आज हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो हम बिल्डिंग बाद में बनेगी, पहले ही आपको पूरा वर्चुअली बना करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ड्रोन, मैं सबको मालूम ड्रोन नहीं बताना चाहूंगा।
इंडस्ट्री नॉर्म इंडस्ट्री 4.0 इसमें बहुत चर्चा हो चुकी है। इंडस्ट्री 4.0 अभी एक ऐसा नेम आया है, रिसेंटली टर्म आई है 2 साल पहले। इसका रिलेशन है साइबर फिजिकल सिस्टम से। मतलब आने वाले ये बोले कि अब जो भी इंडस्ट्री होगी वो सारी की सारी साइबर फिजिकल सिस्टम बेस्ड होगी। दैट मीन्स उसका फंडा ये है कि प्रोसेस इंडस्ट्री में जो भी प्रोसेस चल रही है, अगर वो प्रोसेस नेट के थ्रू कनेक्टेड है तो ऑपरेटर है वो घर से ही बैठ करके अपना डिजाइन करके वो पूरा मतलब घर से ही पूरा ऑपरेशन हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसरो एक ह्यूमनॉइड भेज रहा है नेक्स्ट मार्स मिशन में, जिसमें कोई भी यहाँ से अपना अक्रॉस ग्लोब कोई भी बात कर सकता है और अपने स्पेस की फील ले सकता है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही हमने न्यूज़पेपर पढ़ा था कि इंडिया में हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड व्हीकल बहुत फास्ट ग्रोइंग हो रहा है और हमारे सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी पहली हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड व्हीकल लेकर के गए थे, लोकसभा गए थे। जीन इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत बड़ा एडवांस टॉपिक है और भी बहुत सारे एडवांस फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। जैसे इसकी परिकल्पना है कि नॉनवेज खाने वालों के लिए एक ये परिकल्पना है कि नॉनवेज विदाउट कटिंग ऑफ एनिमल्स, नॉनवेज ग्रोइंग इन लेबोरेटरी। तो ऐसी बहुत सारी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें हम सब सोच सकते हैं। तो मुझे इस नेक्स्ट सेशन में बोलने के लिए इतना वक्त दिया। मैं ऑर्गेनाइजर से सभी को थैंक यू चाहूंगा। होपफुली आपको कुछ ना कुछ नई टर्म्स समझ में आई होंगी। थैंक यू। Thank you very much, sir, for your nice presentation. Now we come on the last presentation, which will be delivered by Dr. Anirudh Kumar Singh. Dr. Singh is basically Ramalinga Swami Fellow and Scientist D at All India Institute of Medical Sciences in Bhopal. Dr. Singh have research experience in the field of medical biology, and before this aims, he was the research scientist and postdoctoral fellow at Research Institute at National White Children's Hospital, Columbus, USA. He has completed more than 8 research projects funded from different funding agencies at national or international level as a principal investigator and co-principal investigator. Currently, he is working on molecular biology, particularly on some tools, advanced tools, that is the qPCR, cloning, mutagenesis, sequencing, and transcriptome, to investigate the role of post-glycogen streptococcus pathogen and mechanical antibody resistant system. So basically, he will deliver his lecture in the field of medical biology. So the complete forum of this new technology theme will be covered. So we would like to request Dr. Singh for his delivery lecture. Thank you, Dr. Singh. Thank you, Dr. Garg, for this invitation. And please rest assured that I have my timer on, so I will not take more than 15 minutes. So what I'm going to talk about today is how next generation sequencing technologies are revolutionizing the healthcare field. So what you're seeing on the screen, my 10-year-old son enjoying his ice cream, and this is my wife and me. And the reason I put this picture on screen is that to tell that although he shares genetics from my wife and me, he still has unique features. So although we are very similar, but we are uniquely similar, we are not identical. And another reason I put this picture here of I can eat any nuts I want to eat, but he has nut allergies. So although he shares the same genetics as my wife and me, we don't have any allergies, he has allergies. So I'm trying to make a point that although we are very similar, but we still have subtle differences in our genome that make us want to stimulate in form of environmental changes, pathogens, or any other stimuli. We react and respond to them differently. So if we look at the
single nucleotide polymorphism, one of the most common DNA alteration in the genome. I'm taking a liberty to assume that everyone here has some understanding of genomes and genes. So roughly 4 to 5 million single nucleotide polymorphism are there in every human. So that about 0.2% different from another human. And these differences have significant impact on our health and well-being. So I'll be using cancer as a disease to emphasize the importance of these genetic changes and how NGS is actually helping us identify these changes and making the patient care better and better with every passing year. So, like just example, like how SNPs affect, how we interact with our environment or pathogens. So we all know that there's a single nucleotide polymorphism in hemoglobin gene can make certain people resistant to malaria infection. So if you look at people in Africa, they have this 6-position nucleotide amino acid variation from glutamic acid to valine, or Southeast Asians, where they have change from glutamic acid to lysine, and they become resistant to malaria. So this is one single polymorphism can make you resistant to some diseases. And then there's another example where we see that CXCR4 gene mutation can make people resistant to HIV infection. And similarly, if there are mutations in our genes which are responsible for metabolizing drugs, the same drug that is life-saving for some people can become a poison for others. So, like I said, I will use cancer as an example. So we know that cancer is such a huge health problem, and I will summarize that in sentence of my Nani ji. I lost her almost 15 years ago, and she was diagnosed with cancer. And when someone told that aapko cancer hua hai, and she gave the best description of cancer in one word, and she said, "Babu, cancer ka matlab ta cancel hola," means you are gone. So people still have this feeling that if you are diagnosed with cancer, your chances of surviving is practically very less. So, but if we can find the cause and reason, we can prolong the life and provide patients with better life, whatever life they have left. So, cancer, if we think about cancer, cancer is basically disease of genome. So mutations in over 100 genes have been linked to cancers, and these mutations can be in germlines, like you are born with these mutations, and about 5 to 10% of all the cancers are associated with germline mutations. So what happens basically, if you have germline mutations in genes, certain genes, then you are at a high risk of developing cancer in later stage of your life. But the most important cancers, which are the driver mutations in cancer, are somatic mutations. So when I say somatic mutations, what I mean to say is that the cells, somatic cells in our body, they all have their genome. Genome is replicating, and if during that replication process there is a change, alteration, and that alteration is deleterious to cell or converts the behavior of the cells, cell becomes cancerous. So these somatic mutations, because they are found in a small population of the cells, are responsible for creating cancer. And there are several kinds of mutations that we know of. This could be point mutations, deletions, insertions, inversions, translocations, copy number variations, epigenetic changes. There is a plethora of changes that can happen in a person's cell, like genome, that could potentially lead to cancer. So we know that cancers are important and they are the driver. Mutations are important and they are driver of the cancer. So it becomes imperative to know that what is causing the cancer, because once we know what is causing the cancer, then we can decide if there is a therapy or if the therapy that we have is going to be suitable for a patient or not. So for an example, there is this one point mutation in one of the very important human genes called MYD88.
So if you have this mutation in this gene, people have high probability of developing B-cell malignancies or cancer of blood cells. So if a person has B-cell malignancies and has this mutation, this person can be treated with a Burton tyrosine kinase inhibitor called ibrutinib. However, if there are other people who have similar cancer, but the cancer is not caused by mutation in MYD88, those patients, if given the same drug, it will not be effective. So those people need to be given a different drug. So knowing what is causing the cancer not only helps you decide the nature of the cancer, but also helps you decide the therapy for a patient. And another thing about these mutations is that not only the driver mutations which are causing cancer, but there are mutations in drug metabolizing enzymes that can make a drug effective or ineffective for a patient. So there are a lot of drug metabolizing enzymes in our body. One of them is PPMT. So this particular enzyme helps degrade the leftover anti-cancerous drugs called thiopurines. So if a person has SMP or mutation in PPMT gene, that makes this protein less effective or ineffective. What is going to happen to that person is, if the person is given this drug, rather than helping the patient, it will actually cause toxicity in terms of myelosuppression, which essentially means that your bone marrow will start making less blood cells. So rather than saving your life, it is actually putting you in more danger. So understanding what is causing the mutation, and if we are giving a drug to a person, whether this person is going to respond to this drug is very important in cancer care. So what happened? So what we are still using, we have been using in terms of technology to identify these mutations are two technologies, which is PCR. We all know it is a quick and cheap technique, and it's very useful and can identify several kind of mutations, whether point mutations, deletions, inversions, translocations. We can practically use PCR to identify any kind of mutation. The problem with PCR is that we have to know where the mutation is, what the mutation is, because if we are using PCR, we need to know the sequence so that we can design our assay. And sometimes specificity can be a concern in PCR-based diagnosis. Another powerful technique that people have been using for identifying genetic alteration is called Sangha sequencing method. It has the same limitation. Prior knowledge of mutation is important because it is amplification-based technology where you amplify a portion of the gene and then you sequence it. Dr. Garg has the facility to do Sangha sequencing. So if you want more detail about the technology, you can probably contact him and he will give you a very good tour. And like I said, when we are and someone has a germline mutation, means you body has that change. It is easy to detect with Sangha sequencing. But when you have somatic mutations, what happens? It's very difficult to detect with Sangha sequencing because if only 5 or 10% of your cells have these mutations, it will not be detected. So the challenge with these available techniques that are still in use is that we cannot map all the mutations because there are several mutations. In some cancers, we have more than 100 mutations. And then if there is a mutation that is not known to people, like, to the fraternity, we will not be able to identify that. And this is where the sorry. So this is where the next generation sequencing technology comes in. So when I say next generation sequencing, a lot of us have heard about the technology. I will just give you a simple example that how next generation sequencing has made sequencing so much easier. So just take an example. If there is a 100-page book and you can read 1 page a day, it will take 100 days for you to read that book.
But what if I tore that book into 2 pages each and give it to 50 people? How much time are we going to take to read that book? It's only 2 days. So what next generation sequencing does is that our entire genome or a large piece of DNA is broken into small pieces, and all these pieces are parallelly sequenced, generating a huge amount of data that was not possible by using Sangha sequencing. And just to give you, a reference or idea that how better and faster and powerful Sangha sequencing is. So we all know that human genome sequencing project was started in late 80s. It took almost 13 years to complete the human genome project with the cost of over $3 billion. Today, with next generation sequencing technology, we can sequence the entire human genome in less than a day for $5,000 or even less than that. So that's the power of next generation sequencing. So I'm not going to get into the details of how the sequencing technology works. I'm just going to give you a brief technical overview of what we do. So suppose we are interested in knowing if there is an alteration in genome. What you need to do, obviously you need to extract the human genomic DNA or RNA. Then what you make small library of that DNA. So if it is DNA, you fragment your DNA in small pieces. Or if it is RNA, then you convert that RNA into cDNA. And then now you have small pieces of DNA that you can sequence parallelly in millions of numbers. And once you have this raw data of reads AB, ATGC, then these sequence files are analyzed to provide you the sequence, and then using bioinformatics tools, we can identify specific changes or the mutations that we are interested in, if they are present in the sample or not. So when we use next generation sequencing, we can do a lot of things, but there are 3 major things that we can do with next generation sequencing. We can sequence the entire genome of an organism or a human. Say there is a child born with some deformities or some problems, and we have no idea what happened to him, why he is suffering from this disease. We can pretty much genome sequence his entire genome and try to find out the cause for his disease. Or we can only exome. Exomes are basically part of gene which are translated into proteins. So if you are interested in knowing if there is a functional problem, a functional mutation in the genome, we don't need to sequence the entire genome. We can only sequence the part which is coding for protein. And the third and more popular in context of cancer diagnostic or disease diagnostic is targeted gene panel. So we know that there are set number of genes which are playing role in a given cancer, like BRCA genes in breast cancer. So we know there are only few genes which are important for that particular cancer. So we can make a panel and only amplify those genes and sequence them. And then we can see what changes have happened that are causing cancer. So the next generation sequencing, the thing that comes to our mind, and probably everyone has heard the term called precision medicine or personalized medicine. Like I just gave you an example how same drug can be effective in one person and cannot be effective in another person. So our genetics interacts with outside and responds accordingly. So there are drugs which are known to work in one person but wouldn't work in another person. So if we understand the cause of the disease, if we understand the nature of all the associated genes which are involved in drug metabolism and efficacy, having the knowledge of all these things can help decide clinician find the most appropriate care for that patient. So this is a pictorial depiction that what can we do, how can we use NGS in precision medicine. So like I said, we can obviously study all the epigenetic changes, expression changes, mutations
And even the kids before their birth, we can do amniotic fluid testing and tell that whether the child who is going to be born is going to suffer from a congenital condition or not. So this is all possible with the use of NGS, because NGS is a sequencing of your target genome in an unbiased manner, and you don't need to have a prior knowledge of that. So a typical workflow for a personalized medicine for cancer treatment, let's say that, what we need to do, obviously, a patient is admitted to a cancer hospital. The lab will take tumor sample or blood sample, process DNA or RNA, amplify the genes which we are suspecting to be causing the cancer, and the companion diagnosis to see which drug will work. You perform next-generation sequencing, and then use bioinformatic analysis to find the changes that could be causing the problem. And once you identify the genes mutations, now you can identify the pathways and the companion diagnosis, which drug is going to be helpful, and then you customize a care for that particular patient. So this is what we mean by personalized medicine. Now, I'm a microbiologist by training, so I would quickly jump into use of NGS in infectious disease. We have all experienced COVID-19. I don't think anyone living currently has experienced anything like COVID before. The power of next generation sequencing can be assessed by the fact that less than 2 months of the advent of post-COVID infection in Wuhan, China, we had the whole genome sequence of the virus. This would not have been possible 10, 20 years ago, to know the entire genome of a virus in less than 2 months. And in less than 3 months, we had 7 WHO approved molecular diagnostic tests. And in 2 years' time, you will be astonished to know that this morning at 10 a.m., when I looked for the number of sequences that were deposited for COVID-19 using next-generation sequencing, it is over 1 crore sequences submitted across the globe for this one particular virus. So that's the power of next-generation sequencing. So with next-generation sequencing, because it is untargeted, unbiased, we can identify pathogens which are not known to people, like SARS-CoV-2 in this case. In our laboratories and in hospitals is that antimicrobial resistance testing is also one area where NGS is coming in picture, because the traditional method of testing antibiotic resistance again relies on our prior knowledge of. We know that there are 5 genes which are responsible for antibiotic resistance. Don't have a lot of space to automate everything. And the big, because when so this becomes the biggest problem. It's like finding a needle in a haystack. So unless until you have a very good method, precise method to find the needle in the haystack, you'll be lost. So as a researcher, what I see where the future NGS is going, one, obviously we need automation, because if we have more human intervention, there are chances of error. So if we want to minimize the chances of error, because in medicine, we cannot afford error. So automation is one thing that we will be hoping. I mean, it's already there. Like, for our country, we will be hoping that there are multiple centers with automated establishment. And then obviously we need really improved bioinformatics pipeline for reporting clinically relevant information. So when you generate huge amount of data, extracting the clinically relevant information and then giving it to clinician so that he or she can make a decision what kind of treatment we have to offer to the patient, that is very important.
And with that, I would like to thank the people in my lab who motivate me on a daily basis to come to the lab and do what I do on a daily basis, and the people who fund our research, especially Department of Biotechnology, STI, and CSIR. And I would also like to thank Dr. Garg and the entire MPCST team for giving me this opportunity to come and share my experience with all of you. Thank you so much. Thank you, Singh. Thank you, Singh, for your nice presentation. Definitely, this NGS technology is new technology, or definitely our participant and we also keep in touch for this purposes. So now the lecture series is completed. Now we have two innovators. हमारे पास दो इनोवेटर हैं जिनको कहीं न कहीं परिषद से हमने मदद की है, वो हमारे साथ जुड़े रहे हैं और आज वर्तमान समय तक भी जुड़े हुए हैं. सो परिषद में क्या है कि हम डिफरेंट सेक्शंस, हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ हैं. तो हमारे साथ दो इनोवेटर हैं, श्री आशुतोष राय जो डेटा कार्ड एंड ट्रांसमिटिंग डेटा इन सब पे इन्होंने काम किया है. इनका इसी टेक्नोलॉजी को लेके पेटेंट ग्रांटेड है और उसके बाद इनकी टेक्नोलॉजी को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इनको मतलब टेकअप किया है. तो अभी कंटिन्यूअसली वो यूज कर रहे हैं. सो हम कहीं ना कहीं मतलब उनके एक्सपीरियंसेस को सुनना चाहेंगे जिससे कि हमारे ट्रेनीज हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी में या हम फ्यूचर में हम इन सब टेक्नोलॉजी को यूज कर पाए और इनके माध्यम से हम अपने पार्टिसिपेंट को मोटिवेट कर पाए. तो आज तो जी आप कृपया मतलब आप अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर करें प्लीज. वहीं से बोल लो ना. Thank you, sir, for this opportunity to share my things. I'm just sharing the PPT. Just a second. अरे आप तो थोड़ा राजस्थान में उसके बाद फिर निश्चित I think PPT is visible. Am I right? No, not visible. Not yet. Not Yes, now visible. Okay, fine. Yeah, thank you. So thank you everyone, and it's really a pleasure for me to be here, and so many dignitaries have presented many things. I'm just like an example how these things convert in a real manner, and how our kind of entrepreneurs who are in the young age and who are trying to get something new, how we can benefit from all these events. And through with the support of MPCST, I have filed a patent named as TVWDM, means it's related to a data card, a data module, which connects with some army communication network, and a value addition it does over it. So the patent has been granted, and all the guidance and mentorship I have got from MPCST. So definitely under Chaube sir has guided me in the initials how I should apply, what kind of write-ups and what kind of procedures I have to follow, and I'm very thankful to him and other team of MPCST. So this is about the product. It's a hardware device, and a app is there. App runs on a visual device which doesn't connect with any kind of GSM, Wi-Fi or Bluetooth network. It only connects with the RF network, which army or other forces, even police, they are already using these radio frequencies. So till now, these radio frequencies have been used for the verbal communication only. With the support of our product, which added over the existing infrastructure, it enables them to communicate visually. The problem with the army was they don't have internet or GSM kind of facility in the border areas, in the operational areas as well. And secondly, they are not supposed to call or communicate any secret data over that. So they have their own army radio network, and in that network, it is reserved network and it is very encrypted. So in that network, they don't have currently uh, uh, light portable
and handy devices for visual communication. So in war zones, they mostly rely on voice data only. So we have provided them a device which they can take over their helmet or in their hand, and they can communicate at live operational area. Lot of frameworks we have added, like one is fleet management system. और बहुत सारे ग्रुप में अगर 15 या 20 लोग किसी ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, सो दे एनी टाइम कैन चेक ईच अदर लोकेशंस. सेकेंडली, इन द फॉरेस्ट एरिया समटाइम इट हैपेंस कि अगर नक्सलाइट एरिया है जैसे, एंड वहां पर वो कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, व्हेन एनी सोल्जर ट्राई टू कम्युनिकेट समथिंग टू अदर वन, तो वो वहां पे बोलता है और जंगलों में आवाज गूंजने से, because of the echo of sound, they get attacked by the Naxalites. So उस अटैक को रोकने के लिए ये पर्टिकुलर सिस्टम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज इट वर्क्स इन अ कंप्लीट साइलेंट मोड, मीन्स इट डजंट मेक एनी नॉइज. स्टिल एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड टू द other soldiers as well as the officers also. So whatever the kind of help is required, that all can be handled by this device. Till now, we have sold almost 126 pieces to our Indian Army. In Siachen, in northeast region, there are at multiple places in the desert area even, the product has been deployed. And for this particular product, we have got multiple awards also, like Honorable Ravi Shankar Prasad, he was ex-MeitY Minister of India. So he granted us 60 lakhs of rupees plus a production facility in Delhi also. Similarly, with Ministry of Defense on the right side, Honorable Rajnath Singh and General Bipin Rawat, they both have granted us 1.5 CR of grant money. So we have now enough money to work. We have our own setup for all these production things and all. Even we have got lab permissions of Army itself. So this whole thing is helpful to us to take our product on a bulk label and enroll it in a complete army. So this is being done on the later stage, but at the initial stage, like I have repeatedly said, MPCST has helped us a lot, and we have got a great guidance from there. This is something about the company. Means in our entrepreneurship journey, I started the company for all these ongoing process, and right now we are serving multiple MNCs as well as our defense forces. Secondly, we have started another venture 3 years back, which is related to the education part. When we have gained a sufficient experience and we got some technology things in enlightenment, then we started this company. And so this is dedicated to the educational and research work, and for students, for different kind of faculties, like we have installed humanoid robot lab things in the MANET as well as in NITTTR, AIC RNTU, Smart City Bhopal. They all are our clients. Even in UIT RGPV, we are installing a AR VR based lab, augmented and virtual reality based lab. These are some glimpses of the work that we have done for the student and researchers in the past. Even in BHEL Bhopal, we have provided the corporate training on the technology side, faculty development program in NITTTR that we have conducted. So in online, offline, every kind of mode. These are some team things. Yeah, the product has also been approved by TIFAC, Technology Innovation Forecasting and Assessment Council, a body of DST. And right now we have got multiple startup awards also. So these are some highlights about the product. So thank you everyone for providing me this opportunity to be here. Thank you. Thanks, Ashutosh. Thank you, Ashutosh, for your nice presentation and demonstrating your technology. So now we have a last innovator. हमारे पास निशी विश्वास जी है जो मेरे साथ ही बैठे हुए हैं. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा. इन्होंने एक्चुअली लो कॉस्ट एग्रीकल्चर टूल्स और इक्विपमेंट किया है. ये भी हमारे साथ बहुत. ये निशी विश्वास जो है ना, वो लो कॉस्ट एग्रीकल्चर टूल पे बता रहा है. तो क्या बता रहा है वो नोट कर लो, मैं आपको पढ़ा दूंगा. कॉमन प्लेटफॉर्म पर भी कुछ अपने काम का होगा तो हमने किया गया है.
हमारे परिषद के द्वारा विज्ञान मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि नई टेक्नोलॉजी और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनका वहाँ पर प्रदर्शनी और आयोजन होता है। इसमें इनको पुरस्कृत किया गया है, इनकी टेक्नोलॉजी को इनको प्रथम पुरस्कार मिला है। इसी तरीके से रीजनल साइंस सेंटर में इनका जो पुरस्कार है वहाँ भी गोल्ड मेडल से इनको पुरस्कृत किया गया है। इनका भी पेटेंट फाइल है और उम्मीद है कि हम जल्दी पेटेंट ले जाएंगे। तो मैं ऋषि विश्वास जी से आग्रह करूंगा कि आप कृपया अपना डिटेल आ जाए। बोलिए। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जय हिंद। मैं ऋषि विश्वास, मैंने 3 फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम किया है। मेरा पहला आविष्कार नवाचार है धान रोपने का मशीन। धान के पौधे रोपने के लिए आज भी हमारे देश में बाहरी मजदूरों की निर्भरता से धान के पौधों का रोपण किया जाता है। भविष्य में धान रोपण का काम में के लिए बहुत किल्लत होने जा रहा है। उसको देखते हुए मैंने ये मशीन तैयार किया है। इस मशीन के उपयोग से एक व्यक्ति एक दिन में 20 मजदूरों का बचत कर सकेगा। इससे किसानों का पैसा, परिश्रम और समय में भारी बचत होगा। किसान आत्मनिर्भर बनेंगे, लोकल के लिए वोकल बनने का अवसर मिलेगा। कोरोना से बचाव का मंत्र 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी का पालन होगा। और रोजगार के नए अवसर प्रदान। एमपी कॉस्ट के सहयोग से मुझे मेरे इस मशीन को प्रदर्शित करने का, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने के कई बड़े मंच मिले हैं। और जहां मैं अपना मशीन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देश के उपराष्ट्रपति श्रीमान वेंकैया नायडू जी के समक्ष भी कर चुका, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के समक्ष कर चुका, और अब तक मुझे कई पुरस्कार और अवार्ड मिल चुके हैं। इनके 24 साहब के मदद से मैंने इसे पेटेंट के लिए भी अप्लाई किया है। इसके अलावा मेरा दूसरा नवाचार है बिना पानी के बर्तन धोने का मशीन। में पानी की किल्लत को देखते हुए यह मशीन एक फ्यूचर मशीन कहलाएगा। इस मशीन के उपयोग से बिना पानी के बर्तन धोया जा सकेगा। और इसमें इस मशीन में एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन लगेगा, जिससे मशीन के बर्तनों का क्लीनलीनेस और हाइजीनेस को डिटेक्ट करके उसमें से बर्तन दोबारा उपयोग किया जा सकेगा। बर्तनों के मैंने टेक्नोलॉजी, इस बर्तन बिना पानी के बर्तन धोने का मशीन को चलाने के लिए एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है, जिसका नाम तूफानी बौछार टेक्नोलॉजी, टॉर्नेडो क्लस्टर टेक्नोलॉजी रखा है। चला जी। वीडियो उसका सेकंड हस्तचलित मशीन है, इसको चलाने का कोई खर्चा नहीं आएगा। एक मौसम में ही किसान फसल कर लेगा।
चेंज कर दो वही कवरेज है नेक्स्ट वीडियो ठीक है ये पानी से चलने वाला चूल्हा है, हाइड्रोजन से चलने वाला। तो मैंने एक इलेक्ट्रोलाइजर बनाया है जो बिजली से चलता है, जिसमें पानी इनपुट है और गैस आउटपुट है। तो वही गैस जल रहा है। तो इसमें वोल्टेज, करंट और प्रेशर और फ्लो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन से कंट्रोल करके ये दुनिया का सबसे सुरक्षित फ्लेम उसी से चल रही है जी जी। वो बर्तन भी रखे हुए हैं, चाय का बर्तन मैंने इसमें चाय बना के पी के उसके बाद इसका फ्लेम टेम्परेचर एलपीजी से ज्यादा है। एलपीजी का मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर 1500 डिग्री है और इसका 3000 डिग्री है। हाँ, इसको सोलर से चलाकर फ्री में हम गैस का यूज कर सकते हैं। और ये गैस जो है ये 1 पार्ट वाटर से 6000 पार्ट गैस बनता है। और जब वो गैस फिर से आग के संपर्क में आता है तो फिर से पानी बन जाता है। तो वो जो पानी बनने में जो फ्रिक्शन क्रिएट, वो फ्रिक्शन ही रिएक्शन ये हो चुका नहीं हुआ ये नहीं अरे बर्तन वाले बच्चे कैसे बर्तन वाला ही नहीं, बर्तन वाला नहीं है। तो नहीं, बर्तन वाला नहीं है, वो थोड़ा सा ये हो गया। तो दोनों डेमोंस्ट्रेशन हो गए। हाँ, वो सीक्रेट टेक्नोलॉजी है। तो चलिए आशुतोष क्या नाम है निशित जी, आपकी दोनों टेक्नोलॉजी बाकी बहुत अच्छी है। तीन टेक्नोलॉजी और डेफिनेटली मतलब इसमें और आगे आप काम करेंगे, हम लोग भी जुड़े रहेंगे कहीं से ऐसा होगा। Now the almost we are going to ending. So before ending this program, I would like to request our colleague Sri Samir Kumre ji to kindly extend a vote of thanks of this program. Thank you, Dr. Respected Honorable Chief Guest, Special Guest, Director General, MP Council of Science and Technology, all the distinguished and eminent guest speakers, my seniors of MP Council of Science and Technology, my colleagues of MP Council of Science and Technology, all the delegates, very good afternoon to all of you. I feel really privileged to be a part of this activity.
And I must say it was very much informative and detailed activity. All the aspects has been beautifully covered. So as I have to proceed, first of all, on behalf of MP Council of Science and Technology, I am thankful to our today's chief guest, Honorable Vice Chancellor Rajiv Gandhi Pradyogiki Vishwavidyalaya, Professor Sunil Kumar sir. Though he is having a very much busy schedule, he has managed time for us and also provide beautiful address about the technology. Sir, on behalf of MP Council of Science and Technology, we are really grateful to you, and we are hoping that in future, sir, your support and guidance will be with MP Council of Science and Technology. Next, I'm grateful to our today's special guest, Dr. Rajnarayan Tiwari sir, Director, National Institute of Research and Environment Health, Bhopal. Sir also have beautifully addressed about the technology related with medical and the impact during the COVID period time. Especially, he has mentioned about the telemedicine relation and especially the importance of telemedicine techniques, especially in COVID periods in remote areas, artificial intelligence in the health sector, data analysis through online portal, technology, competent, drone technology, etc. So, sir, on behalf of MP Council of Science and Technology, I'm really grateful to you, sir. And we are really hoping that in future, your support and guidance will be with MP Council of Science and Technology. Next, I'm on behalf of MP Council of Science and Technology, we are really grateful to Department of Science and Technology for the great initiatives taken by the DST to link all the S&T councils of India, especially Shri Devpreet Datta sir, Scientist G, Advisor, DST GOI, Dr. Rashmi Sharma ma'am, Scientist F, DST GOI, and Ravikant Rajput, Scientist B. We are really grateful to you all. I'm grateful to our Director General, MP Council of Science and Technology, Dr. Anil Kothari sir, for his huge concern about the program. While we were preparing for the workshop, sir has a special concern on the each and every activity, about the contents, about the videos. So because of his guidance and extra efforts, now we are able to conduct this training, this workshop beautifully and superbly. So on behalf of our all team members, sir, we are really grateful to you, and we also wish that your support and guidance will be with us, sir. Next, I am grateful to all the distinguished and eminent guest speakers, especially today we are having guest speakers, Sri Sanatan Sahu sir, Dr. P.C. Vargale sir, Dr. Rakesh Arya sir, and Dr. Aniruddha Kumar sir. In our technical talk, all the important aspects, especially different areas we have covered. Dr. Sanatan Sahu sir beautifully covered about the leather techniques and tools, designs, what are the future technologies that are using and will be used in future, and what are the major aspects by following these aspects, how can we can generate some employment, entrepreneurship. So I'm really grateful to you, sir, Sanatan Sahu sir. Next, I'm grateful to Dr. P.C. Vargale sir for his support, and he has also beautifully covered about the agriculture techniques and the future technologies. I'm grateful to Dr. Rakesh Arya sir, Chief Scientist, MP Council of Science and Technology. Sir has beautifully covered ICT based futuristic technology, different types of terms being used, especially he has mentioned the different type of terms being used in the field of ICT. Importance of relay based system in a different devices, machine learning and deep learning. He has covered beautifully, and I think the knowledge and the details, whatever shared by our speakers, will be further used by the other departments and and all the associated members, delegates, those who are participated in this workshop. Next, I am thankful to Dr. Aniruddha Kumar Singh,
he has beautifully briefed about the cancer, different genes which have been linked to the cancer, and also briefed about the various key for the cancer therapy. Thank you, Dr. Aniruddha. Though you are having a very busy schedule, but you have managed time for our program. I am really grateful on behalf of MPCST Science and Technology. I am really grateful to you. Next, I am thankful to our today's innovators, those who have participated, Mr. Ashutosh Rai ji and Mr. Nishi Biswas. We are having these two innovators, and they have beautifully represented what they have done in the innovation fields. And on behalf of MPCST Science and Technology, best wishes for them for their bright future. Next, I am thankful to Dr. N.K. Chaubey sir. He has superbly coordinated us, and because of his nice efforts, we are able to conduct this training program superbly. I am grateful to Dr. R.K. Garg ji. His sincere effort and valuable efforts made us really easier for us to conduct this conduct this one-day activity beautifully. I am thankful to Shri Lalit Gaur, Amrish Shukla ji, Ravindra Kaurav, and Praveen Singh ji. These all technical hands provides us extra efforts, and consolidate us, strengthen us, and because of their valuable efforts, now we are conducted it beautifully. Last not least, I am thankful to all the state councils, all the associated members in the program, delegates, and all the staff of MPCST Science and Technology who are directly or indirectly involved in the program. Thank you very much, and I am ending myself with these beautiful words. Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Vigyan. Vande Mataram. Thank you. Thank you, Samir ji. And now program is ended, so our participant can leave from this meeting. Thank you very much.